not. You claim that increasing taxes on tobacco discourages consumption, but public health allocation details are missing. Global best practices show that tobacco taxes are most effective only when paired with strong public health interventions. Therefore, this bill is a revenue move. It is a pure and simple revenue move. It is not a public health reform. This is a revenue move to profiteer on taxes. It is not a public health reform. So ours is a federal system of governance, and the cornerstone of the federal polity is transparency in allocation of tax revenues. Taxes are shared with states, but a cess is not. Cess revenue is not shared with states. In cess, the centre retains more revenue while the states get less. This raises important questions on fiscal centralization and reduced autonomy of states. In this bill, there is no clarity on long-term revenue sharing or impact on states, and this undermines trust in the tax cess restructuring. In 2012, cess forms 7% of the union government's total tax revenues. In 2025, cess is estimated to be about 20% of the union government's total tax revenues. This means that for every 100 rupees, the union government earns rupees 20 via cess. A Controller and Auditor General report exposed that in 2018-19, the union government withheld, sir, 1 lakh crore of the 2.75 lakh crore collected through various cesses in the Consolidated Fund of India, or the CFI. Rupees 10,000 crore of the road and infrastructure cess collected during the year was, I quote, neither transferred to the related reserve fund nor utilized for the purpose for which the cess was collected. More alarmingly, rupees 1.24 lakh crore collected as cess on crude oil in the past 1 decade had not been transferred to the designated reserve fund Oil Industry Development Board and was retained in CFI. The report further states that non-creation, non-operation of reserve funds makes it difficult to ensure that cesses and levies have been utilized for the specific purposes intended by the Parliament. What are the cesses and levies being used for? Where is transparency? Where is accountability on the part of the central government in the cesses and levies that it's collecting? In the early 1980s, the Sarkaria Commission recommended that cesses and surcharges should be levied for a specific period only and for a limited time period only. In 2010, the Punchi Commission stated that extension of cesses and surcharge amounts to dilution of the recommendations of the finance commissions and deprive the states of their due share in central tax revenue. Rupees 5.7 lakh crore of cess and surcharge has been lying unutilized since 2019. So, the bill's tax cess structure centralizes revenue with the union government and reduces potential revenue for the states. It lacks transparency in how the cess will be used, raising extremely grave and serious concerns about federalism and the dues of states, as well as accountability of the central government. So, in any case, we know that this government does not practice cooperative federalism. It practices discriminatory federalism. There is no accountability on how the cess will be shared. So, the sharp excise hike in the bill will hit the poorest producers first, small farmers, BD units and tribal communities. The bill raises excise on all unmanufactured tobacco from 64% to 70%, increasing input costs for small processors and pushing thousands of MSMEs, BD manufacturers into distress. For Adivasi Tendu leaf collectors, women BD rollers and small growers across Bengal, Odisha, Jharkhand and Bihar, this translates into direct income loss and a serious blow to their traditional livelihoods. Excise duty accounts for 5% of the union government's revenue. As per the RBI, the divisible pool between states and centre
has shrunk from 89% of gross tax revenue in 2011 to 79% in 2021. This despite the 10% increase in tax devolution to states as recommended by the 14th Finance Commission. Sir, there is no transparency in this bill on how revenues are going to be shared between states and centre. This is a bill which is going to increase fiscal centralization. It is going to deprive the states of revenue. It is going to deprive the states of autonomy. It is increasing the unaccountable centre's powers over monopoly of tax revenues, monopoly of cess. শেষে স্যার একটু বাংলায় বলি আমি জানি যে কেন্দ্র সরকার তো বাংলা বোঝেন না তবুও বাংলায় বলি যে আমি বাংলাতে বলছি কিন্তু আমি যখন বাংলাতে বলছি হয়তো আমাকে বাংলাদেশি বলবে কারণ বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে দিল্লি পুলিশের কেন্দ্র সরকার একটা নোটিশে দিয়েছে যে বাংলাদেশি একটা ভাষা আছে জানো একটা বাংলাদেশি ভাষা বলছে পরিযায়ী শ্রমিকরা নাকি বাংলাদেশি ভাষা বলে আমি বাংলাতে বলছি আমাকে হয়তো বাংলাদেশি বলে তাড়িয়ে দেবে যাই হোক স্যার যারা শ্রমিক যারা কাজ করে যারা তামাক কারখানায় কাজ করে যারা বাড়িতে কাজ করে তারা সবাই একটা জিনিস চায় স্যার মাইনে মাসে মাসে মাইনে পাওয়া উচিত মাইনে যদি না পায় তাহলে কি করে ঘর চলবে কি করে বাচ্চাদের বড় করবে কি করে খাবে কি করে বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাবে মাইনে না থাকলে কি করবে স্যার শ্রমিকরা কি করবে যদি মাইনে পাচ্ছে না Sir, Manrega workers in Bengal have not received their wages since 2022. Nearly 2 lakh crore is due to the state of West Bengal from the union government across various schemes. Sir, Bangla taka atke rakhche keno? Bangla ke bonchito korche keno? Banglar lanchona bondo koro? Banglar taka keno atke rekhecho? Sir, this government is withholding the Manrega workers' wages. People are suffering because this government has not released the wages of Manrega workers. Stop the neglect of Bengal. Banglar lanchona bondo koro. No. Thank you, sir. No. Vande Mataram. Jai Hind. Joy Bangla. Shriman R. Girirajan ji. Thank you, Chairman, giving this opportunity to speak on this bill. Sir, I raise to speak on the Central Excise Amendment Bill 2025. It has been stated in the statement of objects and reasons that with the introduction of GST, Central Excise Act was repealed by Section 174 of the Central GST Act, except in respect of goods listed under the entry of 84th of list 1 of the 7th schedule to the Constitution. This includes tobacco and tobacco products. With the GST Council's decision to discontinue the compensation cess on all goods except tobacco and to transition to a two-rate GST structure while reserving a 40% slab for ultra-luxury and sin goods. Sir, if enacted, the bill will replace the GST compensation cess on tobacco with a central excise duty, allow the center to revise excise rates to match current local overall taxation levels, ensure revenue neutrality by keeping the tax burden on sin goods unchanged. Sir, to create a permanent taxation structure instead of the temporary cess and maintain tobacco under the highest GST bracket of 40% once the rationalized slabs come into effect. In any case, we are opposed to cess because it is wholly consumed by the central government. States do not get any part of it. Sir, we all know for the fact that tobacco addiction is a major problem in our country today. Several lakhs of people, especially youth population, die every year due to tobacco addiction. The union government, rather than taking serious measures to prevent the sale of harmful products like cigarette, pan masala,
and tobacco products, imposing an additional taxes on their manufacturing machinery and production methods is not only inappropriate but also a highly irresponsible action. Sir, to increasing this excise duty, and if the price has gone up, will it not lead to a counterfeiting? Will it not lead to a black market? Which means if you keep increasing taxes, compliance go down. Beyond this, it will actually lead to more black marketing. It will only lead to more avoidance of tax as opposed to revenue collection. The middle class all over the country are very unhappy that they are paying majority of taxes, that they are not getting any tax deduction. Inflation has been high. The cost has been high. Students' fees have gone up. Living cost has gone up. Quality of life in the cities remain very poor. India is the only country where the super rich and super taxpayers have several concessions and the individual salarized class is penalized more than the beer. Sir, a higher share of cesses and surcharges restricts the fiscal space available to the states by reducing the divisible tax pool. That undermines federal fiscal equilibrium and may impair states' ability to invest in essential public services like education, health and family welfare. States like Tamil Nadu and demanded a cap of these levies and that our excess collections can be added to the divisible pool, ensure the fairer revenue distribution. The centre's fiscal constraints and a lack of transparency and a vagueness in the collection of disbursement of cesses have been the real concern. Sir, our leader, Sri M.K. Stalin, pushed the need for devolving at least 50% of the divisible pool to the state, including all non-tax revenues in the divisible pool of taxes through a constitutional amendment or increase the state's share in the divisible pool to compensate for the loss. Sir, the Tamil Nadu's share has reduced 15.25% in income taxes and 16.44% sent in union excise duties to 4,079%, despite we are Tamil Nadu representing 6.12% of the country's population. Sir, since the first Finance Commission, cess and surcharge constitute 23% of the union gross tax receipts but are excluded from the divisible pool, limiting states' share of 32% of the total tax revenue. Below the 41% recommended, the amounts to a revenue disparity. Industrial states receive less than a rupee for every rupee contributed to central taxes, while less developed states like Uttar Pradesh and Bihar receives more. Sir, the underdeveloped states are need to support over allocating funds to them, and the expense to developed states could harm overall national development. Balancing equity and federalism requires reforms in revenue sharing, ensuring states contribute to and benefit from the national development while preserving their financial autonomy. Sir, Tamil Nadu is currently facing significant pending dues from the union government amounting approximately 3 lakh crore. This includes dues related to the This is on central excise, please. Yes. You know you are a very senior member. Please. Manrega, speak on the where subject. Tamil Nadu has been demanding the release of Speak on the 1,635 subject crore only, that will go on in record. overdue. Sir, we are talking about the Speak on the GST. subject. We are asking our share. This is central Real share we excise. are asking. You give notice. We are expressing our concern. Government's concern we are expressing. This can be discussed. I'll finish it. Please. 1,635 crore in overdue wages for workers. Additionally, the state has requested to release 2,670 crore in outstanding dues. Please confine to the expenses subject. For paddy procurement and rice fortification. The Tamil Nadu government has been actually pressuring the center to address these pending dues, highlighting the financial burden. Please confine to the subject. Please. Sir, I will finish it, sir. Please confine not. Tamil Nadu Chief Minister Sri M.K. Stalin has appealed to Prime Minister Narendra Modi to release 2,149 crore is pending funds under the Samagara Shiksha scheme. Finally, I conclude, sir. Tamil Nadu is 1,756 kilometer coastline and varied topography makes it highly vulnerable in natural disasters. Please confine to the subject. Please confine to the subject. Please confine. to the subject. Allocations under the state disaster relief management funds
NTRF have consistently fallen short of actual needs. Sir, finally I tell you, sir, actually the union government has been brought to the law for smoking prohibition in the public places. I would like to urge this government, tobacco consumables also to be prohibited. That only good for the nation. Thank you, sir. Thank you. I'll again request to the all coming speakers, please. The subject is Central Excise Amendment Bill 2025, confined to the subject only. Please. I'll request you to go to your place. Please, Dr. Sandeep Kumar Pathak, please. Thank you. Thank you very much, Honorable Chair, sir. The proposed law aims to amend the Central Excise Act 1944. Basically, this act is just to reorganize the taxation which is already ongoing. इसमें समझने वाली बात यह है सर कि पहले जो जीएसटी में जिस कैटेगरी में था, जीएसटी के कैटेगरी में चेंज हुआ, चेंज होने के बाद जो सेस लगाया गया था उस सेस को विड्रॉ करके यहाँ पर एक्साइज के रूप में टैक्स लगाया जा रहा है एडिशनल। ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर ने ये एक्सप्लेन किया और क्लैरिफाई किया जो कई सारे डाउट्स थे कि ओवरऑल टैक्सेशन में जो अमाउंट है क्या वो इंक्रीज होगा। उन्होंने निचले सदन में लोकसभा में ये स्पष्ट किया है कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सर आज हम ऐसे महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर कोई राजनीति नहीं हो सकती है क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों के हेल्थ से संबंधित है, लाखों करोड़ों लोगों के लाइवलीहुड से संबंधित है और सरकार को भी इससे बहुत बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसपे आज तक किसी भी सरकार ने अपना विजन स्पष्ट और क्लियर नहीं किया है। इनफैक्ट मैं ये अगर किसी से पूछूं कि भाई आपका विजन क्या है, क्या टोबैको यूज होना चाहिए या पूरी तरीके से बैन होना चाहिए तो कैसे रेगुलेट होना चाहिए, किसी के पास एक कंस्ट्रक्टिव आंसर नहीं है। सबसे पहले तो मेरा आपके माध्यम से ऑनरेबल मिनिस्टर से ये प्रश्न है कि आपका विजन क्या है। क्या आप टोबैको और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स को आने वाले फ्यूचर में धीरे धीरे करके बंद करना चाहेंगे और लाखों लोगों के जीवन को बचाना चाहेंगे, या फिर जो अमाउंट ऑफ टैक्स जो आप जनरेट करते हैं वो आपकी खुशी का एक कारण है जो कि लगभग 3% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू जनरेशन है। इतना बड़ा अमाउंट है और लाखों लोगों को जॉब भी देती है। तो क्या ये लाखों लोगों को जो जॉब्स मिल रहे हैं वो प्लस जो रेवेन्यू है वो ओवरराइड कर रहा है हेल्थ कंसर्न्स को? तो इसको हमें डाइसेक्ट करना चाहिए और इसको बहुत थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो मैं यही चाहूंगा कि भाई आपका विजन क्या है। अगर सरकार का विजन ये है कि वो हेल्थ को कंसर्न में सामने रखती है और जनता के हेल्थ को प्राइमरी समझती है, जो टैक्स के माध्यम से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो स्पष्ट करे और मेजरेबल आउटकम के माध्यम से हर साल दर साल उसको फिर मेजर करना चाहिए। अभी जो देखने में लगता है ऑनरेबल चेयर सर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि सरकार का ध्यान हेल्थ के ऊपर है, क्योंकि अगर आप हेल्थ में देखें तो लगभग 30% यूथ ऐसे हैं जो टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर कैंसर का आप ये ले लीजिए 70% जो कैंसर है वो टोबैको रिलेटेड है। इसमें से अबाउट 40 to 50% कैंसर जो डेथ्स हैं वो कैंसर से एसोसिएटेड है। ये तो सर बड़ी बीमारी हो गई। अगर छोटी बीमारी को ले तो ये बहुत वाइड स्प्रेड जो कंज्यूम करते हैं उनमें बहुत बुरी तरीके से ये फैला हुआ है और इसके कारण जो इकोनॉमिक लॉस है वो अबाउट 2 लाख करोड़ के आसपास है, विच इज मैसिव। नाउ इफ यू कंपेयर the revenue generation versus the economic loss because of various other parameters, then you are no gain situation. It is like a loss. It is loss in every other terms. Honorable Chair sir, एक प्रश्न आता है कि भाई बैन करने से क्या इसका समाधान निकलेगा और क्या इसको पूरी तरीके से बैन किया जा सकता है। ये तो सरकार बताएगी कि उनका विजन क्या है। गुजरात में लिकर बैन किया गया और पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। कोई भी ऑर्डर कर सकता है शराब को और वो उसके घर पे डिलीवरी हो जाती है। बिहार में भी वो कई जगह राज्यों में अलग अलग स्तर पर इसको बैन करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बैन सक्सेसफुल नहीं रहा।
इसको समझना पड़ेगा कि नो मैटर आपके इंटेंशंस करेक्ट हैं, बट क्या वो सक्सेसफुल है या नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे ही आप एक्सेसिव टैक्सेशन लगाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सिगरेट का, ऑनरेबल चेयर सर, सिगरेट का जो मार्केट है 14 बिलियन के आसपास का है, इसमें हाई टैक्सेशन रहता है। हमारे देश में, हमारा देश पूरी दुनिया में 4th नंबर का सबसे ज्यादा इलीगल और इलिसिट सिगरेट का मार्केट है। तो ये समझना पड़ेगा कि एक्सेसिव टैक्सेशन आप लगा दो, इट्स वेरी इजी टू, आप यू लेवी टैक्स एंड यू से कि हम इसको रोकना चाहते, बट यू सी द रिपरकशन, आर वी रियली एबल टू कंट्रोल द सिगरेट कंजम्पशन? द आंसर इज नो सर। तो इसलिए ये समझना पड़ेगा कि भाई आपका इंटेंशन क्या है, आपका विजन क्या है। आपके जो नियम को देख के लगता नहीं है कि आपका इंटेंशन फेयर है, और ऐसा लगता है कि सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन के लिए ही आप कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं और देता हूं सर, टोबैको से टैक्सेशन पे लगभग 70-75 हजार करोड़ एनुअली हम जनरेट करते हैं, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेशनल टोबैको कंट्रोल में सिर्फ 50 करोड़, ऑनरेबल चेयर सर, सिर्फ 50 करोड़ सरकार की तरफ से जाता है। ये ऑथेंटिकेटेड डेटा है। तो ये 0.07% ही जाता है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ कलेक्ट करने में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, और टोबैको कंट्रोल में आपका तो 50 करोड़ तो कुछ भी नहीं होता है। और ये 50 करोड़ एग्जैक्ट 50 करोड़ नहीं है, इट वेरीज बिटवीन 13 करोड़ टू 80 करोड़। सो इफ यू टेक ओवरऑल क्यूमुलेटिव ऑफ द इंटायर इन लास्ट 10 years, यू वुड फाउंड इट अराउंड 50 करोड़ सर। इसका मतलब तो एक और इंटरेस्टिंग चीज है सर, कि पहले जो टोबैको कंट्रोल के नाम से फंडिंग जाती थी, अब उसको टेरिटरी कोर प्रोटेक्शन के नाम से एलोकेट किया जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन टू इवन ट्रैक कि आपका जो अमाउंट है वो किधर जा रहा है, वो अमाउंट कहां पे आप अमाउंट भेज रहे हैं। इकोनॉमिक, जस्ट वन, आई टेक कपल ऑफ मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सर। सर अगर आप एक चीज और देखेंगे कि जो रेगुलेटरी डिस्पैरिटी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। रेगुलेटरी डिस्पैरिटी में देखेंगे कि सिगरेट पे हम ज्यादा टैक्स लगा देते हैं। हमें लगता है कि सिगरेट पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो कंजम्पशन उसका कम हो जाएगा, और जो बीड़ी है और तंबाकू है उस पे टैक्स हम नीचे रखते हैं। हमें यह लगता है क्योंकि राजनीति भी है, राजनीति के कारण लाखों लोग की लाइवलीहुड उससे जुड़ा हुआ है, तो बीड़ी पे और टोबैको पे टैक्सेशन काफी कम रखा जाता है। इसका असर यह नहीं होता कि कोई सिगरेट पीना छोड़ देता है, असर यह होता है कि जो ज्यादा पैसे वाले फिर सिगरेट पीते हैं, जिसके पास पैसा कम होता है वो बीड़ी पे और बाकी पे स्विच हो जाता है। सर जो बीड़ी मेकर विमेन है, मोस्टली विमेन बीड़ी रोलिंग का काम करते हैं और घर से करते हैं, बच्चे उसी घर में रहते हैं, कोई वेंटिलेशन नहीं होता। सर इस पे इतना ज्यादा हेल्थ डेट्रीमेंटल है कि इसको आप काउंट भी नहीं कर सकते इसमें। ऑनरेबल चेयर सर, इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो पान मसाला में सरोगेट एडवर्टाइजमेंट है वो रैम्पेंट है। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि विमल के नाम से या 2 पाउच गुटखा के नाम से। जस्ट फाइनल थिंग सर, फिनेंस मिनिस्टर जी ने कहा था कि 1 लाख करोड़ के आसपास जो खेती है उसको डाइवर्सिफाई कर दिया गया है, लेकिन सर ये लगता नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन 2.87% के रेट से राइज हो रहा है, एक्सपोर्ट 36% राइज हो रहा है, सर कंजम्पशन भी बढ़ गया है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं मेरे पार्टी के पास और टाइम है सर, 3 मिनट उससे मैं ले लूंगा, कन्फाइन मेरी पार्टी के टाइम से मैं ले लूंगा सर। इसमें जो आईटीसी एक इंपॉर्टेंट, एक बड़ी कंपनी है जो सिगरेट बनाती है। आईटीसी एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जो बीड़ी बनाती है, डाइवर्सिफाइड कंपनी है। इसमें सर सरकार का डिफरेंट पीएसयूज के माध्यम से अबाउट 25% इन्वेस्टमेंट है। सर सरकार खुद आईटीसी कंपनी और कई ऐसे सिगरेट टोबैको रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है जो टोबैको बनाती है। इसके अलावा सर इन कंपनी से जो टोबैको रिलेटेड है वहां पॉलिटिकल फंडिंग भी हो रहा है, पॉलिटिकल फंडिंग्स लिए जा रहे हैं। मैं आज नाम नहीं लूंगा, सारे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को ये फंडिंग की है। तो सर जो कंज्यूम कर रहा है वो सफरर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है किसान वो सफरर है। फिर फायदा किसको है? फायदा है वो ट्रेडिंग जो कर रहे हैं कंपनी उसको, और कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज को जो इससे फंडिंग ले रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। श्री मेधा रघुनाथा रेड्डी सर। Respected Chairman, sir, thank you. Sir, Deputy Chairman, sir, I rise to speak on the Central Excise Amendment Bill 2025, an important and timely reform that seeks to modernize India's tobacco excise framework with the GST compensation cess set to be phased out. It is essential that the government ensures continuity in revenue flows from products that
carry significant public health internalities. This bill rightly addresses that gap by updating a schedule that has remained largely unchanged since 2017. Sir, positive features of the bill, sir. Physical stability with public health responsibility. Sir, the revision of excise duties before the expire of GST compensation cess is a prudent step. Tobacco taxation has a dual role, mobilizing revenue and discouraging harmful consumption. International exercise clearly shows that appropriate taxation reduces usages and improves health outcomes. This bill strengthens physical preparedness without compromising public health priorities, sir. Sir, a clear, modern and rational duty structure. The introduction of product-specific and category-wise excise schedule is a welcome modernization earlier. The duty structure was fragmented, ambiguous, and prone to classification disputes. The new system covering cigarettes, unmanufactured tobacco, and emerging nicotine devices brings clarity, reduces loopholes, and ensures parity across the products, sir. Sir, concerns specific to Andhra Pradesh, sir, while I broadly support the bill, I wish to draw the attention of the House to pressing issues affecting tobacco farmers in Andhra Pradesh, India's largest FCV tobacco producing state, where lakhs of rural families depend entirely on the crop, sir. Deep distress among FCV tobacco farmers. This year, production exceeded the authorized crop size of 167 million kgs. The resulting oversupply, weakened demand, and depressed prices have pushed farmers into distress. Many growers could not even recover their basic cost. This has triggered serious livelihood challenges for thousands of small and marginal farm families in Andhra Pradesh. Sir, in the Tobacco Board Action System incompleteness, sir, the Tobacco Board Action Platform, which is the backbone of price discovery, has been heavily disturbed this season, sir. Buyer participation was weak, actions were delayed, and rejection rates were far higher than usual. As a result, many farmers faced severe cash flow shortages, making it difficult to repay loans or prepare for the next crop cycle. Beyond tobacco, the state has suffered distress in the crops like paddy, cotton, pulses, banana and mango, along with issues in a crop enumeration. Left many farmers bare-handed, sir. Sir, constructive sessions in the union government, sir. Periodic review of the excise impact on tobacco growing regions. Since the bill significantly revises duties across tobacco categories, I urge the government to periodically review its impact on production, procurement, behavior, and market stability in states like Andhra Pradesh. This can be done in coordination with the Tobacco Board and state governments to ensure that revenue reforms do not inadvertently establish rural livelihoods, sir. Sir, strengthening the Tobacco Board action system, improving action timelines, grading transparency and buyer participation does not require major structural changes, but only requires better oversight and enforcement. Small improvements here will provide enormous relief to farmers, sir. I request to Ministry of Commerce and Industry to take up this matter on priority, sir. With these observations concerned and constructive sessions, I extend my support to the Central Excise Amendment Bill 2025 on behalf of our YSRCP, sir. I hope that government will take note of the hardship faced by the farmers in Andhra Pradesh and act swiftly to address their
pressing concern, sir. Thank you, sir. Thank you, Reddy ji. Mani Niranjan VC ji. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir, for giving me an opportunity to speak on the Central Excise Amendment Bill 2025. Sir, the Central Excise Act 1944 historically served as the backbone of India's indirect tax system on manufactured goods. This framework underwent a structural transformation with the introduction of the GST in July 2017, which subsumed most central excise duties. The bill increases the excise duty on all major firms to control consumption of the tobacco. But in Odisha, tobacco farmers of Ganjam, Koraput, Rayagada, Kandhamal already suffer from no MSP, no institutional protection, total dependence on private traders, high seasonal vulnerabilities. This has direct implication for farm gate prices, trade procurement margin, and contact farming arrangements. Unlike manufactured tobacco product, raw tobacco taxation directly affects primarily cultivators, not just downstream consumers. The policy intent is to prevent tax arbitrage between raw and processed tobacco, which could otherwise undermine revenue and health objectives. Sir, for the first time, the bill explicitly brings under excise no cigarette, e-cigarette, nicotine inhalers, oral and transdermal nicotine products. All such products attract 100% excise duty. This closes a major regulatory gap where technology-driven nicotine substitute were escaping legacy tax laws despite growing adoption among youth. Sir, the bill imposes no direct expenditure obligation on the Consolidated Fund of India. Instead, it seeks to stabilize post-compensation cess tobacco revenues, protect health sector fiscal capacity, and maintain the role of tobacco as a sin tax source. However, the bill also increases risks of compliance evasion, incentive for illicit trade, and cross-border smuggling if enforcement does not scale proportionately. Sir, Odisha has a large home-based BD rolling workforce, largely composed of women, ST/SC communities, and informal contract laborers. Sir, higher duty on chewing tobacco and BD may reduce downstream orders, shift production further into formality, and increase income insecurity for workers. Without parallel labor rehabilitation, the tax impact risks becoming socially regressive. Sir, the Odisha reports that high oral cancer prevalence, widespread smokeless tobacco use among youth and tribal populations, higher excise, increase retail price elasticity, delay youth initiation, and reduce long-term health system burden. However, without ring-fenced allocation of this revenue to state health system, the public health dividend remain only indirect. Sir, the excise policy is not merely a revenue instrument in a state like Odisha. It is a social instrument, a tribal sensitivity instrument, and a livelihood instrument. Any amendment that increases centralization, raises excise burden, or opens new commercial avenues without safeguards hits the rural people disproportionately. Excise amendment without a proper social impact assessment will increase alcoholism, debt burden, domestic distress, and health risks in tribal and rural districts of Odisha state. Odisha, in the leadership of former Chief Minister Sri Naveen Patnaik ji, had worked for decades to bring discipline,
community control, and social responsibility into the excise sector. This bill threatens to undo the sensitive progress. This bill also risks undermining the state's revenue autonomy. Odisha uses excise revenue for tribal development welfare program, SC/ST girls education, rural health care, anti-alcoholism campaign, and disaster relief and cyclone management. Disturbing the state's excise ecosystem directly impact these priority sectors. If it will further cross procurement prices, push small farmer out of cultivation, and increase trader monopoly. So, the bill may protect central revenue, but it does not protect farmers, rural laborers, and tribal households, women workers, and state-level social security systems. सर, जब एक्साइज की बात आता है तो एक्साइज और आदिवासी, सर एक्साइज और आदिवासी एक का रिलेशन है. जब एक्साइज का बात आता है सर, जो आदिवासी लोग जो सोशल फंक्शन करते हैं, कल्चरल फंक्शन करते हैं, तो सर एक्साइज में वो जो महुआ होता है, महुआ वो 10 किलो तक रखते हैं घर में और 5 लीटर तक वो बनाते हैं. तो उसका डेटिज को और ड्यूरिंग मैरिज परफॉर्मेंस, तो ये जो एक्साइज वाले सर, एक्साइज डिपार्टमेंट एक्साइज ऑफिसर्स, वो ट्राइबल को फॉल्स केस में इंप्लिकेट करके कोर्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं. तो ये एक्साइज डिपार्टमेंट को ये एक्साइज में इसको भी इंक्लूड करना है. ट्राइबल राइट को प्रोटेक्शन देना है. थैंक यू सर. थैंक यू. Dr. M. Thambi Durai ji, the subject is Central Excise Amendment Bill 2025. Sir, I know better than you, sir. I'm sorry. I exceed per. Don't exceed. Oh, please. Honorable Deputy Chairman, sir, on behalf of my ADMK party and General Secretary Thri Edapadi Palaniswamy, I rise to extend my support to the Central Excise Bill 2025, provided the shares of the state government get the due share. This bill is a timely and necessary reform aimed at safeguarding the public health, maintaining revenue stability, and ensuring that harmful products like tobacco do not become cheaper as the GST compensation chest is gradually phased out. Sir, it is equally important to emphasize that this reform does not harm states' revenues. The transition from the GST compensation chest to recalibrated excess duty as an administrative realignment, ensuring revenue neutrality for both center and state. Under the current government, states may already receive 41%. At the same time, it must have reduced that. Sir, I would like to offer constructive suggestions. I'm coming to that point. Sir, first of all, introduce annual inflation indexed increase in specific excess duties so that tobacco products do not become cheaper over time. Second, allocate a fixed proportion of the additional excise revenue directly to tobacco-related disease prevention, cancer, care facilities, and assistance programs. Strengthen rehabilitation and skill development initiative for the BD workers. Sir, especially in Tamil Nadu, workers, most of the people living on the BD workers in Tirunelveli, Tenkasi, Dindikkal, Vanambadi, Ambur, Krishnagiri, my districts, sir. These are the places where the BD workers are more depending on that. When you are taking this kind of thing, you have to give rehabilitation, give the skill development program. That is what I am telling, sir. Sir, and also, we know that enhance the national awareness campaigns, especially targeting school and college students to prevent early addiction and protect India's demographic dividends, sir. Sir, Honorable DMK member has said he also supported the bill, but he said one word, black marketing may come. Sir, already a lot of black marketing in Tamil Nadu is going on this kind of products. This is going on because there is a rule, this kind of cigarettes must not be near school and colleges.
In Tamil Nadu, if you go all the places, all the college schools, you can see the cigarettes and everything, tobacco selling in this thing. That is what I want to tell, sir. Regarding that, another point, sir, regarding the tobacco consumption remains one of the leading causes of non-communicable diseases in our country. With the introduction of calibrated 40% GST on ASEAN goods and the proposed increase in excess duty across tobacco categories, the government has to take decisive steps to reduce the affordability, particularly among the youth and vulnerable population. This measure not only maintains overall tax incidence, but also strengthens the public health efforts, sir. Sir, I am once again at which all other members of this side also said. See, the revenue is this federal setup. Our country is a federal setup. We are coming from it is a state of council. Therefore, it is bound and duty, ADMK party also say for federal system. Because the revenue share also after GST, when the GST introduced, at that time, the party we opposed, the ADMK party, we opposed the GST at that time. We have not supported that. Therefore, now, when you are producing this kind of GST taxes on this kind of products, at the same time, the state revenues must have reduced. Therefore, that is what my intention, and also I support this bill, provided that the share of the revenue must go to the state as well as the central government, which is required. Thank you. Thank you. Dr. Ravi Chandra Baddi Raju. థ్యాంక్ యూ సార్. ది సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ అమెండ్మెంట్ బిల్ 2025 పై మాట్లాడే అవకాశం కల్పించినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. సామాజిక కోణంలో కాకుండా ఆర్థిక వ్యవస్థలు కూడా ముఖ్యమైన బిల్ కాబట్టి దీన్ని మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున సమర్థిస్తున్నాం. వీఆర్ సపోర్టింగ్ దిస్ బిల్ సార్. తెలంగాణలో తొలి ముఖ్యమంత్రి 10 ఏళ్ల పాలన గౌరవ కేసీఆర్ గారి పాలనలో తెలంగాణ రాష్ట్రం వేగవంతమైన ఆర్థిక పురోగతిని సాధించింది. రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఆదాయం కీలకం కాబట్టి కేంద్ర స్థాయిలో ఏ విధాన మార్పు జరిగినా అది రాష్ట్రాల ఆర్థిక ప్రణాళిక, సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది. అదేవిధంగా మద్యం అమ్మకాల్లో నియంత్రణ లోపం వల్ల తెలంగాణ గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాల్లోని తీవ్రమైన సామాజిక సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆయా కుటుంబాల్లో చోటు చేసుకునే హింస వల్ల మహిళలు, చిన్నపిల్లలు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా నేను మీ దృష్టి తీసుకురావదలుచుకున్నాను సార్. ఒకటి, తెలంగాణ సహా ఇతర రాష్ట్రాల్లో అధిక పన్నుల కారణంగా బ్లాక్ మార్కెట్ వ్యవస్థ రోజురోజుకు పెరిగిపోతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం పాలసీ రూపొందించే క్రమంలో ఆదాయంతో పాటు సామాజిక బాధ్యతను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఆ పాలసీ నిష్పక్షపాతంగా అక్రమ వ్యాపారాన్ని నిరోధించేలాగా ఉండాలి. ప్రతి ఆదాయ పన్ను విధానం ప్రజారోగ్యాన్ని కేంద్రీకృతం చేసుకోవాలి. తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కల్తీ, నాసిరకం మద్యం వల్ల అనేక అనర్థాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. అందువల్ల తప్పనిసరిగా నాణ్యతా ప్రమాణాలు, రెగ్యులేటర్ ఆడిట్లు, ఉత్పత్తి రవాణాపై సాంకేతిక పర్యవేక్షణ ఉండాలి. ఆదాయ పన్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పరిధిలో ఉన్న దాని సామాజిక ప్రభావం, ఆదాయ పరిణామాలు జాతీయ స్థాయిలో ఉంటాయి కాబట్టి కేంద్రం మరియు రాష్ట్రాల డేటా షేరింగ్, సాంకేతిక పోర్టల్స్ వంటి అంశాల్లో సమన్వయంతో కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. తర్వాత తెలంగాణలో ముఖ్యంగా మేము కల్లు గీత కార్మికుల కోసం గౌడ కమ్యూనిటీ వారికి దాదాపు 15 నుంచి 20% రిజర్వేషన్లు కూడా లిక్కర్ షాపులలో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది దేశం మొత్తం కూడా బీసీలకు, గౌడ కులస్తులకు ఉపయోగిస్తే బాగుంటుందని సూచనిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా ఎక్సైజ్ సరుకుల కోసం డిజిటల్ ట్రాకింగ్ వ్యవస్థ, అక్రమ తయారీపై కఠిన శిక్షలు, అవగాహన మరియు పునరావాసన కార్యక్రమాల సహకారం మరియు ఎక్సైజ్ ఆదాయం మీద అధికంగా ఆధారపడే రాష్ట్రాలకు ఆర్థిక రక్షణలు అమలు చేయాలని కోరుకుంటూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిజామాబాద్, కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం లాంటి నగరాల్లో బీడీ కార్మికులు తన వృత్తితో పాటు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మౌత్ క్యాన్సర్స్ కూడా ఎక్కువైనందున వల్ల వాళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పుడు ఈ ఎక్సైజ్ నుంచి వచ్చే రెవెన్యూలోంచి 25% వాళ్ళకి క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి ఇచ్చేసి వాళ్ళని ఆదుకోవాలని, ఎంఎన్జే హాస్పిటల్ నిండా కూడా మౌత్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఇవన్నీ చూసుకుంటూ జవాబుదారీతనం మరియు పారదర్శకంగా ఉండే ఎక్సైజ్ పాలసీ సంస్కరణలు మా మద్దతు ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఎక్సైజ్ బిల్లులో అటువంటి అంశాలు ఉన్నందున మేము ఈ బిల్లును సమర్థిస్తున్నాం. కానీ ఏ ఎక్సైజ్ చట్టమైనా తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాల సామాజిక, ఆర్థిక అంశాల పట్ల సున్నితంగా ఉండాలి. రైతు కూలీలు, మహిళలు, యువతను వ్యసనాలకు లోను కాకుండా వారు అక్రమ మద్యం బారిన పడకుండా కాపాడగలిగే సంస్కరణలు రావాలని కోరుకుంటూ ఈ एमएनजे हॉस्पिटल्स मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर इस गवर्नमेंट को, कैंसर ने बहुत बढ़ गया, मौत कैंसर भी तेलंगाना में बहुत बढ़ गया. इस रेवेन्यू से भी तेलंगाना का रेवेन्यू में 25% रेवेन्यू भी कैंसर पेशेंट्स को देकर हॉस्पिटल में है, सो पेशेंट्स को बचाने के लिए आपकी माध्यम द्वारा गवर्नमेंट को
गवर्नमेंट के दृष्टि में लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर। इसमें थैंक यू रविंद्र। श्री पीपी सुनीर नॉट प्रेजेंट। श्री संजय सेठ जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि तंबाकू और तंबाकू से निर्मित पदार्थों के लिए जो आम जनता पे स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ रहा है उसको रोकने और उसको कम प्रोत्साहन मिले, उसके लिए ये सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 को लाया गया है। इस बिल में जो पहले सेंट्रल सेस था उसको हटाकर अब वो सेंट्रल एक्साइज के अंदर आ गया है और इस सेंट्रल एक्साइज का जो पूल होगा उसका 42% के आसपास स्टेट्स को भी मिलेगा जो उनका हिस्सा होता है। आज तंबाकू और तंबाकू से बने हुए पदार्थ हर वर्ग के लोग यूज कर रहे हैं, वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, सभी कहीं ना कहीं इसको यूज करने लग गए हैं और इसकी वजह से कैंसर, हार्ट और लंग सब बीमारियां बढ़ रही हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार करीबन हमारे देश में 1.35 मिलियन लोग इन बीमारियों से मौतें हो रही हैं और जैसा कि आजकल आप न्यूज़पेपर में देखते हैं यंग लोगों के अंदर हार्ट की बीमारी और कैंसर की बीमारियां काफी बढ़ गई हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन पदार्थों की वजह में जुड़ी हुई हैं। इनके सिगरेट पीने से जहां जो सिगरेट पी रहा है उसको सबसे बड़ा नुकसान होता है, वहीं दूसरी तरफ पैसिव स्मोकर का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। पैसिव स्मोकर वो होता है जो सिगरेट नहीं पीता है लेकिन दूसरे की सिगरेट का धुआं अपने अंदर लेता है, उसकी भी बीमारी उसको लग रही है। आजकल आपने देखा है कि गुटखा भी इस वक्त बहुत ज्यादा तंबाकू युक्त जो गुटखा है वो भी बहुत लोग खाने लग गए हैं और इस गुटखे को हमारे उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो या और सभी राज्यों में इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। छोटे से छोटा आदमी छोटे पाउच को लेता है, मुंह में डालता है और इससे कैंसर की बीमारियां, ज्यादातर कैंसर की बीमारियां सब ये गुटखे के खाने की वजह से ही हो रही हैं। अगर इसकी एडवर्टाइजमेंट को देखें तो गुटखा वाले हों चाहे शराब वाले हों, ये एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से करते हैं कि वो उनका, चूंकि सरकार ने उसके ऊपर रोक लगा रखी है, तो वो एडवर्टाइजमेंट वो इस तरीके से करते हैं कि उसका कोई सोडा या पानी की बोतल उसी नाम की रख लेते हैं और उसका एडवर्टाइजमेंट उसके नाम से कर देते हैं, जिससे लोगों के दिमाग में ये पहुंच जाए कि ये गुटखे का ब्रांड है, इसी की बोतल दिखा के वो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इसके ऊपर हमारी सरकार को रोकने का काम तुरंत करना चाहिए, जिससे कि इसके एडवर्टाइजमेंट जो हम लोगों ने रोक लगा रखी है उसका फायदा कोई और तरीके से ना ले सके। जो सिगरेट की स्मगलिंग हो रही है उसके ऊपर भी हमारी सरकार बहुत ज्यादा जागरूक है। कस्टम्स, मैं फाइनेंस कमेटी में बैठता हूं, वहां कस्टम के ऑफिसर्स बताते हैं कि हमारे यहाँ रोजाना बड़ी बड़ी संख्या के अंदर हम लोग सिगरेट की स्मगलिंग को रोक रहे हैं और पकड़ के उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी GST 2 का रिफॉर्म्स किए थे, उसके अंदर जहां एक तरफ उन्होंने जनता के लिए एक बहुत बड़ा खजाना खोल दिया, उनकी आम जरूरतों की चीजों को बिल्कुल सस्ता कर दिया, वहीं दूसरी तरफ सिन गुड्स को, जो हमारे सिन गुड्स हैं, जो उसमें ये तंबाकू और सिगरेट ये सब भी आते हैं, इन सब के ऊपर भी उन्होंने टैक्स की बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे इसके लोगों को यूज करने के लिए प्रोत्साहन कम मिले। अभी मैं विपक्ष के किसी एक साथी का सुन रहा था, उन्होंने कहा टैक्स बढ़ाने से
कोई सिगरेट नहीं छोड़ देता है, लेकिन टैक्स बढ़ाने से कम वो उसके घर वाले उसको रोकते हैं कि भाई बजट हमारा इतना था, तुम्हारी सिगरेट में जा रहा है, कम करो। तो कम से कम तो होगा। साथ ही जो हम लोगों का इस बिल के अमेंडमेंट से जो हम लोगों ने जो सेस हटा के ये एक्साइज लगाई है, इसमें अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू के ऊपर 70% ड्यूटी और सिगरेट पर 2700 से 11,000 रुपए प्रति 1000 स्टिक पे टैक्स लगा दिया गया है। और इस टैक्स के आने से एक तरफ तो हमारे खजाने भी भरेंगे और दूसरी तरफ ये लोगों के अंदर इसको न खरीदने के लिए एक प्रोत्साहन भी होगा। हमारे यहाँ जो इससे बीमारियां हो रही हैं उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित रहते हैं। जहां हमारे पास 2014 में केवल 7 एम्स थे, आज 23 एम्स हो चुके हैं और मेडिकल कॉलेज की भी संख्या 387 से बढ़कर 808 हो गई है। यूपी में, मैं यूपी से आता हूं, यूपी के अंदर मेडिकल कॉलेज 12 से बढ़कर 45 हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें उसलिए की जा रही हैं जिससे लोगों को स्वास्थ्य का फायदा मिल सके। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक योजना रही है जो कि बहुत सक्सेसफुल योजना है, आयुष्मान योजना, जिसके अंदर 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जा रहा है मुफ्त इलाज का, उसका 9 करोड़ लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। उसके अंदर यही कैंसर, यही लंग्स, यही हार्ट की बीमारियों का इलाज होता है, तो कम से कम उसका इलाज तो हो पा रहा है। कुछ लोगों की ये चिंता रही है कि जो हमारे किसान इस तरीके की खेती करते थे, तंबाकू या तेंदू पत्ते की खेती करते थे, उनका क्या होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी को मैं बधाई भी दूंगा कि उन्होंने 1,11,000 हेक्टेयर भूमि को दूसरी खेती में करने के लिए प्रोत्साहन दिया और लोग उसको करने लगे और आगे उसके लिए बहुत सारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे कि वो अपनी ये खेती छोड़ के दूसरी खेती कर सके। अंत में मैं विधेयक को और प्रभावी बनाने के लिए जो कुछ सजेशन देना चाहता हूं, उसके अंदर मैं ये चाहता हूं कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र और ब्लॉक स्तर पर एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाए जहां पे लोग आसानी से मदद पा सकें। दूसरा, इस विधेयक से प्राप्त राजस्व को एक निश्चित परसेंटेज जो है वो कैंसर रिसर्च और अवेयरनेस कैंपेन के लिए निर्धारित किया जाए और ये जो बच्चों के अंदर जो आज के दिन में ड्रग्स और ये सूखा नशा चल रहा है उसको रोकने के लिए जरूर प्रभावी कदम उठाने चाहिए। मैं सारे सदन से ये एक निवेदन करता हूं कि ये जो बिल है ये केवल सत्ता पक्ष की तरफ से लाया हुआ बिल नहीं है, ये देश हित के लिए बिल किया गया है और मेरा ये निवेदन है कि सारे लोग मिलके इस बिल को पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसका समर्थन करता हूं। बहुत धन्यवाद। श्रीमती जेबी माथेर हिशम, नॉट प्रेजेंट। श्री राम जी। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 पर बोलने का अवसर दिया और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर, इस बिल के अनुसार तंबाकू, सिगरेट, गुटखा आदि पर 70% तक का टैक्स है और कुछ जो उनकी लंबाई के अनुसार सरकार ने 5200 रुपये प्रति हजार, 7000 प्रति हजार के हिसाब से 2700 रुपये प्रति हजार पीसेस के हिसाब से टैक्स लगाने का काम किया है और एक सराहनीय कदम है। और मैं तो ये चाहूँगा सरकार 70% तो छोड़ दे, 100% करना चाहिए और जो 5200 रुपये, 7000, 6500 रुपये रखा है इसको और बढ़ा करके 100% तक लेके आना चाहिए ताकि देश के अंदर इसके प्रति जो लगाव है गुटखा को लेके, सिगरेट को लेके, तंबाकू को लेकर के इससे खत्म किया जाए। और कहीं ना कहीं से ये सरकार की भी मंशा रही है कि इस तरह के कदम उठाने से जो डिपेंडेंसी बढ़ रही है, सिगरेट पे बढ़ रही है, जो गुटखा पे बढ़ रही है, तंबाकू पे बढ़ रही है, उसे कम किया जा सके। मानवर, हम सबको मालूम है कि एक बड़ा ही हानिकारक चीज़ है
और उसकी वजह से देश के अंदर जितने भी पेशेंट कैंसर के बनते हैं हर साल, लगभग 15 लाख लोग कैंसर से प्रभावित होते हैं और उसमें से 15 लाख में भी 40% जो पॉपुलेशन है कैंसर पीड़ितों की, वो सिगरेट, तंबाकू और गुटखा से होती है, जिसमें ओरल है, लंग भी है, तमाम तरह के कैंसर और बनते हैं। तो इसको रोकने के लिए भी एक प्रभावी कदम के लिए निश्चित जरूरत है। यहाँ पर मान्यवर, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि तमाम तरह के प्रचार, अभी हमारे संजय सेठ जी भी कह रहे थे कि तमाम तरह के भ्रामक प्रचार आते रहते हैं गुटखा को लेके। गुटखा कंपनी है लेकिन पान मसाला के नाम से प्रचार कर रही है, सेम चीज है, सेम सेगमेंट है। इस तरह के प्रचारों को रोका जाना चाहिए मान्यवर। साथ ही जो कई बार मैंने देखा भी है कि सरकार इसमें एक अवेयरनेस लाने के लिए कैंसर पेशेंट्स का भी इंटरव्यू दिखाती टीवी के ऊपर कि गुटखा खाने से हमें प्रॉब्लम हो गई और मेरा परिवार बर्बाद हो गया। इस तरह की एक्टिविटी को बढ़ाना भी जाना चाहिए। और साथ ही मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं मान्यवर कि जितने भी हीरो हीरोइन इसका प्रचार करते हैं टोटली प्रतिबंधित किया जाना चाहिए कि सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा का कोई भी हीरो हीरोइन इसका प्रचार प्रसार नहीं करेगा। और साथ ही माननीय, मैं आपसे कहना चाहता हूं सरकार से आपके माध्यम से कि जब लिक्वर के लिए, भांग के लिए सरकार लाइसेंस देती है उनको बेचने के लिए, लेकिन यहां पर क्या होता है, सिगरेट, तंबाकू, सिगरेट को बेचने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। अगर आप इस पर भी लाइसेंस की व्यवस्था कर दें कि सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट उनको लाइसेंस देगा तभी वो उसको बेच सकते हैं, अदरवाइज उसको नहीं बेच सकते। तो 100% इस पर जो हमारे प्रभावित हो रहे हैं लोग, युवा प्रभावित हो रहे हैं, बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, उस पर काफी रोक लगने का भी काम करेंगे। और साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से भी कहना चाहता हूं मान्यवर कि जो दुकानें आसपास हॉस्पिटल के आसपास में है, स्कूलों के आसपास में है, उनको पूर्णतया प्रतिबंधित करना चाहिए ताकि बच्चे उन दुकानों से दूर रह सकें। बच्चे निकलते हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। कहीं ना कहीं से हमारे देश का जो नौजवान है, हमारे देश का आने वाला जो जनरेशन है, उससे प्रभावित ना हो सके। मतलब इसको लेकर के मैं आपसे कहना चाहता हूं इस सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू किया जाए और सिगरेट, तंबाकू और गुटखा जैसी जो चीजें हैं इनको बिना लाइसेंस को उपलब्ध ना किया जाए, लाइसेंस जारी किया जाए तभी कोई व्यक्ति इनको बेच सके। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। माननीय श्री गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया। माननीय महोदय, मैं एक श्लोक से शुरुआत करता हूँ। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञे गसन्त्य मूढ़ा पदमाव्ययम् तत्। माननीय महोदय श्री सभापति जी, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में देश के वित्तीय ढांचों में, चाहे जीएसटी हो, इनकम टैक्स सुधार हो, कॉरपोरेट टैक्स तंत्र हो या जुड़ाव, आधारित डिजिटल क्रांति हो, इन सभी में एक बढ़कर एक परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। यह विधेयक भी उसी सुधार यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। मैं इस कल्याणकारी और सर्वहितकारी विधेयक को लाने के लिए माननीय वित्त मंत्री बहन श्री निर्मला बेन सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस सदन में केवल एक सांसद के रूप में नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के करोड़ों गरीब माताओं, संघर्षरत युवाओं और उन परिवारों का प्रतिनिधि बनकर खड़ा हूं जो तंबाकू जैसी बुराई से चुपचाप घायल होते हैं और जिनकी आवाज आज इस सदन तक पहुंच पाई है। आज माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने यही पवित्र कर्म किया है। तंबाकू और उसके संबंध उत्पादों पर कर बढ़ाकर जन स्वास्थ्य की रक्षा का असाधारण संकल्प लिया है। ये हमारा भारत में हर साल कैंसर से 13,50,000 लोग मरते हैं।
ये बहुत बड़ी जो है युवानों चले जाते हैं। महोदय जी, मैं ये मेरा पर्सनल बात करता हूँ। हमारी कंपनी है श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट, उसमें 7,000 से ज्यादा कर्मचारी है। हमारी कंपनी में आज तंबाकू मुक्त है, क्योंकि कंपनी में कोई व्यसन वाला आदमी नहीं है। तो आज पूरा मैं जैसे हमारी कंपनी व्यसन मुक्ति तंबाकू मुक्त बनी, ऐसे में भारत को तंबाकू मुक्त बनाना चाहता हूं और मैं इसलिए प्रार्थना करता हूं। तंबाकू युवाओं के सबसे ज्यादा नष्ट करता है, जो देश का भविष्य है। कई बार एक छोटी सी पुड़िया, एक छोटा सा पैकेट एक गरीब परिवार को पूरी जिंदगी के दुख में धकेल देता है। आज सरकार ने वही पुड़िया, वही जहर महंगा करके पहुंच कठिन बनाकर युवाओं और गरीब परिवार को बचाने का रास्ता खोला है। माननीय सभापति महोदय, तंबाकू के नए युवा उपयोगकर्ताओं में 43% अनुमानित कमी, अवैध और सस्ते उत्पादों पर कड़ी रोक और स्वास्थ्य बोझ में भारी कमी, यह केवल आर्थिक गणना नहीं है, यह भविष्य की सुरक्षा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी की इस नैतिक नेतृत्व को प्रणाम करता हूं। यह विधेयक, जिसमें तंबाकू उत्पादकों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है, सीधे सीधे हमारे युवाओं, गरीब वर्गों और भविष्य की पीढ़ियों को स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने का उद्देश्य रखता है। प्रस्तुत दस्तावेजों में यह स्पष्ट है कि भारत में तंबाकू उपयोग 38% से घटकर 28% पर आया है और सरकार का लक्ष्य है कि इसे 2025-26 तक 13% तक लाना है। यह केवल कर वृद्धि नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य पर एक निवेश है। माननीय सभापति महोदय, एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 23 है। आयुष्मान भारत से 10 करोड़ से अधिक परिवार सुरक्षित, मेडिकल कॉलेजों का ऐतिहासिक विस्तार, तंबाकू पर बढ़े कर से मिलने वाला राजस्व इन्हीं जीवन रक्षक कार्यक्रमों को और बल देगा। साथ ही यही भी महत्वपूर्ण है कि सरकार किसानों को वैकल्पिक फसलों की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए योजनाओं चला रही है, जैसे कि दस्तावेजों में 1,11,889 एकड़ भूमि पर वैकल्पिक खेती के सफल प्रयोग का उल्लेख है। यह तंबाकू उत्पादित क्षेत्रों में भी एक दूरदर्शी मार्ग प्रदान करता है। यह सिद्ध करता है कि यह सरकार जीवन और जीविका दोनों का संतुलन जानती है। माननीय सभापति महोदय, मैं विशेष रूप से इस बात की सराहना करता हूं कि हमारी सरकार ने राज्यों को मिलने वाला हिस्सों को प्रभावित किए बिना एक संतुलित कर सरसंचा बनाई है, ताकि विकास और स्वास्थ्य दोनों साथ साथ आगे बढ़े। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से सरकार ने कोई नया शेष नहीं लगाया है, बल्कि तंबाकू उत्पादकों पर एक्साइज ड्यूटी लगाई है। जैसा कि वित्त मंत्री जी ने लोकसभा में चर्चा के दौरान स्पष्ट किया कि यह कोई नया कानून नहीं है और न ही केंद्र सरकार कोई अतिरिक्त टैक्स लगा रही है। सभापति महोदय, अंत में मैं एक व्यापारी और एक जनप्रतिनिधि दोनों के रूप में इतना कहना चाहता हूं कि समृद्ध राष्ट्र वही है जहां स्वास्थ्य, नागरिक, पारदर्शिता और दीर्घदृष्टि नीतियां तीनों एक साल सत्य है। यह विधेयक भारत को विकसित भारत
2047 के लक्ष्य के करीब जाने वाला रहेगा। ये सब इस संशोधन का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। सभापति जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद गोविंद भाई। नाउ श्रीमती जेबी माथेर हिसम। Honorable Vice Chairman, I rise to speak on the Central Excise Amendment Bill 2025. I begin by placing on record that this bill exemplifies everything wrong with the implementation of GST regime by this government. While my party and I recognize and respect the need to protect the income of the roughly 6 million tobacco farmers across India, this cannot be at the cost of human lives and deterioration of health of millions of Indians. WHO Global Report on Trends in Prevalence of Tobacco Use 2000 to 2024 shows the dangerous statistics from tobacco use in India. In 2024, India accounted for approximately 243.48 million tobacco users aged 15 and older. Domestic estimates of deaths from tobacco use in India annually is 1 million plus. That is, 2,500 people die every day across India from tobacco use. The burden of cancers directly attributable to tobacco was projected to increase from 1,69,000 in 2015 to around 2,36,000 by 2025, an increase of nearly 40%. Now the government is bringing this bill with publicly announced objective of this being a sin tax to bring tobacco use under control by higher prices. While the objective itself is laudatory, the hidden objective of this government is to raise resources by use of the so-called sin tax to cover the revenue shortfalls from the disastrous GST implementation. Most importantly, the hypocrisy of this government stands exposed when they have kept the duty on BDs low when all scientific and medical studies points to BDs without filters causing much higher health hazard and death than tobacco smoked with filters. By no means am I advocating supporting use of cigarettes or any form of tobacco, but the hypocrisy of this government in keeping the low duty on BDs versus other forms of tobacco needs to be exposed. So we are seeing many headlines since 3 days. Honorable Finance Minister to table health security say national security bill. As I already explained, this bill does not secure the health of the nation. On the claim of national security, it is also my belief that it is merely a notional security. Let me explain. This bill will increase the cost of tobacco products and further incentivize the Gujarat model of tobacco export. Let me explain by showing this Gujarat model of tobacco export. I refer to a Press Information Bureau publication wherein the Director General of GST Intelligence has identified units located in Gujarat Special Economic Zone who along with Delhi-based exporters have utilized tobacco and other related products falling under CTH 2403, which are subject to tax rates from 93% to 188%, including cess, to claim refund of over 300 crores by claiming to have exported these products through via Gujarat Special Economic Zones. More than 1,000 crores of fake invoices without supply of goods to facilitate these refunds. This modus operandi was possible by an overvaluation of 3,000% of market value of CTH
2403 products. By increasing the tax further through this bill, it will only encourage the nationwide adoption of this Gujarat model of exports, undermining the economic security of this nation. Indian courts, including high courts with reference to Supreme Court precedents, have stated that economic offences affect the nation's financial health and must be treated sternly, often describing them as a form of economic war due to their severe and far-reaching consequences for poor citizens and for the national economy. This bill takes one step further and declares economic war against states in this union. The cess reduces fiscal space and financial autonomy of the state, while incentivizing Gujarat model of exports. Meanwhile, the state governments are left to deal with the health consequences from tobacco, from the ever-shrinking financial resources. Now, my here honourable MP, Arun Singh ji, our senior fellow member from the BJP, has exposed the attitude of Modi Sarkar. He says Modi Sarkar's bill provides for very high tax for smokers who use pipes. In Bollywood movies, you see pipes used by ultra-rich and the villains. He says Modi Sarkar has imposed high taxes on cigarettes, which, may I point out, is smoked by the rich, upper class and maybe middle class. And my respected fellow senior member from BJP, Arun Singh ji, says the government has imposed very low taxes on BDs smoked by the poor people. I am shocked, respected Vice Chairman, I am really shocked. What is Modi Sarkar's priority? Is it that they will frame policies, including tax policies and high duties, to safeguard the health and lives of the ultra-rich, rich, upper middle class and middle class, while they will frame policies, including tax policies, low duties without any concern of high tobacco smoking by the poor, affecting their health and often leading to their death from cancer from tobacco. Our honourable leader of opposition in Lok Sabha so rightly called this Sarkar 11 years back. This is Soot Boot Ki Sarkar. How right our... Dr. V. Sivadasan, Dr. V. Sivadasan, please. Your time is over. Please, Dr. V. Sivadasan, please. Yes. Please. It's not going on record. Respected Chair, the government should take the initiative to reduce the use of cigarette and other tobacco products. But we also need to realize that living in a single day in Delhi will cause the damage equivalent to smoking 15 cigarettes. Sir, this is the situation in Delhi. Here we are discussing the tax of cigarette, but the data shows the illegal trade and use of narcotic drugs are increasing day by day. Respected Chair, the report shows that some of the ports are the gateway for the drug mafia. It should be addressed by the union government. Sir, along with the imposition of the higher excise duty of such items, the government should tax the super rich, but they are not ready to tax super rich. Sir, here the union government is not ready to impose inheritance tax or wealth tax upon the super rich. Sir, in Kerala, lottery sellers, there are 2 lakh people. Many of them are differently able, old and unable to any other jobs. The union government imposed a higher GST 40% upon them. Sir, this is a cruelty against the poorest of the poor, against the lottery sellers in the state. Our respected minister earlier, George Kurian is here. He knows very well, I believe, who are connected with the people. They know the pathetic
condition of the lottery sellers because of increasing GST. Sir, the state of Kerala is requesting for the reduction of GST or paper lottery owned by the state government. Sir, state were guaranteed 40% annual growth rate in GST revenue if the compensation system had continued. Kerala would have received approximately 54,000 crore if GST compensation system had. Sir, the union government increasing their revenue income in different manner. They are collecting tax in various ways, including huge amount of cess. Sir, but they are not considering the financial stability of the state. The cigarette causes cancer and serious diseases. So proper education and health awareness are necessary to prevent the usage of cigarette and other tobacco products. Sir, education, health are primary responsibility of the state. So the union government should share more revenue with the state, and union government protect interest of the state and their own revenue. Sir, this is my humble request. Government, the union government will protect the lottery sellers and those who are poorest of the poor. Thank you, sir. Thank you, Dr. B. Sivadasan ji. Dr. Bhagwat Karad. माननीय उपसभापति महोदय, आज सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 पर बोलने के लिए मुझे वक्त दिया, इसीलिए मैं आपका और हमारे हाउस लीडर माननीय जेपी नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं। आज भारत देश की इकोनॉमी चौथे नंबर पे है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग रिफॉर्म्स और अलग अलग कंप्लायंस कम करके आज हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, और ये अमेंडमेंट बिल जो है उसी के माध्यम से ही एक बड़ा रास्ता लगता है। हमारे लर्नेड मेंबर प्रमोद तिवारी जी ने बताया कि भारत सरकार की खजाना भरने का काम हो रहा है। अभी वो इस हाउस में नहीं है, लेकिन उन्हीं को भी पता है कि 41% जो जीएसटी आता है वो 41% राज्य को हिस्सा जाता है। उसी के साथ जैसे अरुण सिंह जी ने बताया, अभी तक जीएसटी के माध्यम से 5.5 लाख करोड़ राज्य को दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप भारत सरकार की है। श्रीमती सागरिका घोष जी ने जो बताया, ये टोबैको पे टैक्स लगने के बाद आरोग्य के लिए क्या कर रहे हैं, ये सरकार आरोग्य के लिए क्या कर रही है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे आरोग्य मंत्री माननीय नड्डा जी के मार्गदर्शन पे जो काम चल रहा है ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। जैसे मेडिकल एजुकेशन हो, हॉस्पिटल्स हो, यानी इनोवेशन हो, हर क्षेत्र में मेडिकल क्षेत्र में काम चल रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, ये विधेयक सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 1944 का बदलाव करने के लिए है। इसी का एक ही उद्देश्य है, टोबैको टैक्सेशन को स्टेबल करना, टू स्ट्रेंथनिंग हेल्थ पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें रिडक्शन ऑफ द कैंसर पेशेंट्स, रिडक्शन ऑफ द हार्ट डिसीजेस और लंग डिसीजेस के लिए इसका उपयोग हो सकता है। उसी के साथ रिडक्शन ऑफ द टोबैको यूज भी हमें अचीव करना है। पूरे दुनिया में भारत देश टोबैको प्रोडक्शन में और टोबैको कंजम्पशन में नंबर 2 पे है। माननीय उपसभापति महोदय, टोबैको प्रोडक्ट्स कीमत इस बिल के माध्यम से टोबैको की कीमत बढ़ेगी। इसी में मैन्युफैक्चर्ड टोबैको प्राइस विल इंक्रीज फ्रॉम 64 to 70%. Cigarette duty will be raised from 2,700 to 11,000 per 1,000 पीस। च्यूइंग टोबैको हो, इसमें भी इंक्रीज फ्रॉम 25 to 100%। हुक्का हो, स्मोकिंग मिक्सचर हो या स्नफ हो, इसमें भी शुल्क बढ़ाने की इस बिल में प्रावधान है। जीएसटी की शुरुआत हमारे देश में 1 अप्रैल 2017 को पूरे देश में जीएसटी की शुरुआत हुई है, जिसमें पहले 5%, 12%, 18% और 28% जीएसटी था। लेकिन तंबाकू के उस टाइम टैक्स बढ़ाना, इसलिए जीएसटी कॉम्पेंसेशन के माध्यम से टैक्स बढ़ाया था, और एक कॉम्पेंसेशन सेस उस टाइम लगाया था। वो टैक्स सिर्फ 2022 तक था, लेकिन अभी ये 31 मार्च 2024 तक ये टैक्स है। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस को खत्म करके यह सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
और माननीय वित्त मंत्री जी ने 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन सेकंड जनरेशन जीएसटी किया। इसके माध्यम से कॉमन मैन को रिलीफ मिला, बिजनेस को बूस्ट मिला और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी में 3 स्लैब्स है जिसमें 5%, 18% और सीन गुड्स जैसे टोबैको हो, पान मसाला हो, एरिएटेड ड्रिंक्स हो, लग्जरी गुड्स हो, उसमें 40% टैक्स है। माननीय सभापति महोदय, तंबाकू की लत हमारे देश की बड़ी समस्या है। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और आपके माध्यम से सदन को और देशवासियों को बताना चाहता हूं, कार्सिनोजेंस जिसके माध्यम से कैंसर होता है जो ये तंबाकू में रहता है। उसके सिवाय तंबाकू में ब्लड वेसल का जो ल्यूमेन रहता है, वो ब्लड वेसल का वॉल थिक होता है और ल्यूमेन कम होता है। इसके माध्यम से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी होती है और स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर के डिसीजेस भी होते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, जैसे मैंने बताया, भारत दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक है, तो तंबाकू के ऊपर सर्वेक्षण और डिफरेंट स्टडी भी हो चुकी है। भारत में 267 मिलियन यानी 29% भारतीय वयस्क किसी ना किसी रूप से तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू के कारण 70 लाख से भी अधिक लोगों की मौत होती है। तंबाकू और तंबाकू यूज के कारण होने वाली बीमारियों का आर्थिक बोझा 1.77 लाख करोड़ से भी अधिक है। अगर तंबाकू सेवन कम करे तो ये बोझा कम हो सकता है। माननीय उपसभापति महोदय, यह विधेयक जनहित के लिए महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी है। रिसर्च के अनुसंधान के माध्यम से यह भी निष्कर्ष आया है, अगर 10% कीमत से भी तंबाकू कम खाई तो 4 to 5% खपत कम होंगी और विशेषकर हमारे देश के युवा और गरीब लोगों को आरोग्य में सुधार होंगी। इस विधेयक का उद्देश्य यही है, लोगों को हानिकारक आदतों से दूर करना, कर प्रणाली में स्टेबिलिटी लाना, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करना, उत्पादक किसानों को दूसरी व्यवस्था करना। तंबाकू प्रोडक्शन में ऊपर पर्यायी व्यवस्था क्या है, इसी के ऊपर भी हमें इस चर्चा करना होगी। भारत देश, जैसे मैं बोला, दुनिया में नंबर 2 का तंबाकू प्रोडक्शन में है, जहां तंबाकू प्रोडक्शन बहुत ही होता है। लेकिन अभी अलग अलग खेती के पर्याय जो बताया है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग खेती को अलग अलग सुविधा दे चुके हैं। किसान हमारे देश की रीढ़ है, किसान मजबूत हो तो देश मजबूत होता है। तंबाकू की खेती यानी अनिश्चित खेती है, बाजार की तंबाकू के लिए अनिश्चितता है, स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव है। सरकार की नीतियां भी लगातार बदल रही है, इसलिए तंबाकू की खेती प्रमाणित नहीं है, अच्छी नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं। तंबाकू प्रोडक्शन की जगह किसान ने अलग खेती या दूसरी खेती करना चाहिए, ये और इसी प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग स्कीम्स केंद्र सरकार के माध्यम से है। जैसे तेल बिया की फसलें जिसमें खर्चा कम आता है, बाजार स्थिर है, तेल की मांग भी ज्यादा है, सब्जियों की खेती, फलों की खेती, दाल और अनाज की खेती, मसाले वाली फसली। मैं किसानों के लिए 2 पंक्तियां बताना चाहता हूं। हम जोखिम नहीं अवसर चुनेंगे, हम जोखिम नहीं अवसर चुनेंगे, हम तंबाकू नहीं तरक्की उगाएंगे। माननीय उपसभापति महोदय, तंबाकू के खेत में कमाई हो सकती है, थोड़ी ज्यादा कमाई हो सकती है, लेकिन शरीर में बीमारी उगती है। इसलिए स्वास्थ्य हमेशा तंबाकू से ज्यादा कीमती है और स्वास्थ्य संभालने के लिए तंबाकू को खेती को कम करना चाहिए। अगर जीवन बचाना है तो तंबाकू को छोड़ना है, क्योंकि धन फिर से कमाया जा सकता है पर खोया हुआ स्वास्थ्य फिर नहीं आ सकता। इन शब्दों के साथ वित्त मंत्री जी माननीय निर्मला सीतारमण जी मैडम का मैं अभिनंदन करता हूं और इस विधेयक को सपोर्ट करता हूं और सभी सदस्य जो ट्रेजरी बेंच को हो या विरोधक को मैं आह्वान करता हूं कि ये हेल्थ के लिए है, पूरे भारतीय के हेल्थ के लिए है और ये हेल्थ और लोगों के हेल्थ के लिए सपोर्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कराड़ जी। श्री मस्तान राव यादव बीडा। Thank you, Deputy Chairman, sir. On behalf of Telugu Desam Party and our leader and Honorable AP Chief Minister Nara Chandrababu Naidu garu support this Central Excise Amendment Bill 2025, sir. Under the
able leadership of Prime Minister Sri Narendra Modi ji, the government has taken a decisive step to maintain stable taxation on tobacco products as the GST compensation cess is phased out. This bill ensures that the overall tax burden on tobacco remains high, discouraging consumption while safeguarding public health and government revenues. Public health. Protecting the nation's youth and vulnerable groups. The GST2 reforms, effective from September 2025, have raised the tax on sin goods like cigarettes and other tobacco products to 40%. By keeping tobacco expensive, the government is directly contributing to the reduction of non-communicable diseases and promoting a healthier, more productive population. Fiscal stability, sir. Ensuring revenue neutrality for centre and states. The GST compensation cess was always a time-bound mechanism agreed upon by all states. This ensures that tobacco doesn't become a cheaper, protecting public health and preserving revenue neutrality for both the centre and states. States will continue to receive 41% of divisible pool. Sir, in conclusion, tobacco taxation is and must be a tool for protecting public health. But tobacco farming is for lakhs of families in Andhra Pradesh and other states a question of day-to-day survival. Their labor resilience and adoption of scientific practices have enabled India to become the world's second largest exporter of unmanufactured tobacco and have already helped the government deliver on its promise of doubling farmer incomes in the sector. We must make efforts to combine a strong deterrent against harmful use with an equally strong safety net and opportunity framework for our tobacco farmers. With this, we will support this bill on behalf of the Telugu Party. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Sri Madan Rathod ji. धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 पर बोलने का अवसर दिया। उपसभापति महोदय, मुझे अभी विपक्षी माननीय सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो उत्पाद लोगों को बीमार करता है, यदि उसी पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाए और उससे जो आय प्राप्त होती है उन्हीं बीमारों का इलाज करने में उपयोग में लिया जाए, तो इनको क्या ऐतराज हो सकता है, ये समझ में नहीं आया। उपसभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, तो उस समय अधिकांश वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को समाप्त कर दिया गया था। कुछ वस्तुएं जैसे तंबाकू और तंबाकू उत्पाद, डीजल, पेट्रोल, ये केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहे थे। जीएसटी आने के बाद तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी घटानी पड़ी थी और बदले में क्षतिपूर्ति शेष ये लगाया गया था, जो 5 वर्ष के लिए लगाया गया था। हमारे अभी प्रमोद जी तिवारी साहब बोल रहे थे कि जब गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री जी ने और इस जीएसटी का विरोध क्यों किया। अब उस समय आपने और ये क्षतिपूर्ति और शेष ये का प्रावधान आपने नहीं रखा था, इसलिए विरोध किया था। वो समझ नहीं पा रहे थे इस बिल को, लेकिन कांग्रेस भी लाना तो चाहती थी जीएसटी, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी। ये भी सभी जानते हैं कि उनके और जो कैबिनेट नोट को भी उनके नेता ने किस प्रकार से फाड़ के फेंक दिया गया था, उस समय उनकी चलती भी नहीं थी। इसलिए ये बातें कह देना आसान है, लेकिन करने में हिम्मत चाहिए। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो हिम्मत दिखाई, और केवल हिम्मत ही नहीं दिखाई, क्षतिपूर्ति शेष लगा करके उन राज्यों को भी पूरा हिस्सा दिया, ये हम सभी भी जानते हैं। इसलिए इस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना जरूरी है, ये हमें कोई आपत्ति इसमें होना नहीं चाहिए। तंबाकू का सेवन एक बहुत बड़ी समस्या है। हम सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष लगभग 13.5 लाख लोग इसके शिकार होते हैं, और विश्व की जो तंबाकू से होने वाली मौतों में लगभग 17% भारत में होती है। यह सही है कि कच्ची तंबाकू जैसे खैनी, गुटखा, हुक्का आदि के प्रयोग से मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये ऐसी बीमारियां हो जाती है, व्यक्ति ठीक से बोल भी नहीं पाता। ये कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है उसकी कि वो बोलने के लिए उसके सांस में और वो तंबाकू का वो चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है, जिससे उसकी मौत भी हो जाती है। ऐसी समस्याएं हैं, तो यदि इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाए, इस पर हतोत्साहित करने का प्रयास किया जाए, तो इसमें किसको आपत्ति हो सकती है, इसको समझने की जरूरत है। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये तंबाकू उत्पादन से
मूल्य में स्थिरता भी आएगी, युवाओं में इसके उपयोग के लिए हतोत्साहन होगा और 42% राजस्व वैसे के वैसे ही राज्यों को मिलता रहेगा। इस विधेयक का उद्देश्य जीएसटी क्षतिपूर्ति शेष खत्म होने के बाद भी इन उत्पादकों पर कोई बोझ को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। विधेयक ये हम जानते हैं, ये तो सभी ने बोल दिया है कि सिगरेट, सिगार, चिरूट पर 5,000 से 11,000 तक का प्रति 1000 स्टिक की दर से उत्पाद शुल्क लगेगा। ये सब बातें आपने सबने बोली है। ये भी कई माननीय सदस्यों ने बोला कि उत्पादों की बिक्री 40% जीएसटी क्षतिपूर्ति समाप्त होने के बाद और लगेगी, ये भी। और मैं इस पर भी नहीं कहूँगा, मैं तो राजस्थान से आता हूँ, इसलिए राजस्थान के संदर्भ में मैं कुछ बातें आपके सामने निवेदन करना चाहूँगा। राजस्थान में तंबाकू का उपयोग चिंताजनक है। लगभग 41% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। कई महिलाएं जो मजदूरी में जाती है, दिन में मजदूरी का काम करती है, लेकिन वो खैनी साथ में रख करके और जाती है। कई तो ऐसे ठेकेदार हैं जो मजदूरों को ले जाते हैं, वो खुद ही और उनके दैनिक वेतन के साथ ही ये खैनी देने का काम करते हैं। ये बीमारी को और प्रोत्साहन देने का काम है। यदि ऐसे इस पर यदि रोक लगाई जाए तो मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। हुक्का, बीड़ी का उपयोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक है और इसी प्रकार से किशोरों में भी ये बढ़ता जा रहा है, विद्यार्थियों में भी, और इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। यदि रेट बढ़ाई जाएगी, कीमतें बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से अंकुश तो लगेगा ही लगेगा। बीड़ी उपयोग में कई लोग कहते थे कि इसमें मजदूरों का और हानि होगी। मैं एक निवेदन करूं, जब उत्पाद शुल्क कारखाने पर लग रहा है तो किसी किसान पर नहीं लगने वाला है। किसान यदि उत्पादन करता है तंबाकू का तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, कोई उस पर और एक्साइज ड्यूटी नहीं लग रही है, और एक्साइज ड्यूटी किसी मजदूर पर भी नहीं लग रही है। मजदूर यदि बीड़ी बनाता है तो उस पर भी नहीं लग रहा है, केवल कंपनी पर लगेगा, जो उत्पाद करेगा उस पर लगने वाला है। इसलिए इसकी चिंता करने की जरूरत उनको नहीं है। हमारे यहाँ पर बीड़ी उद्योग, जिसमें कई श्रमिक भी काम करते हैं, कोटा, बारा, बूंदी, धौलपुर, भरतपुर, और यहाँ पर भी बीड़ी उत्पादन लोग करते हैं सीधे, और इस पर उत्पाद किसानों को नुकसान नहीं है, किसी मजदूर को भी नुकसान नहीं है। हमारे यहाँ पर कैंसर के मरीज बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं। विशेष रूप से पंजाब से एक ऐसी ट्रेन आती है जो बीकानेर पहुंचती है, उस ट्रेन का नाम ही लोगों ने बदल करके कैंसर एक्सप्रेस या कैंसर ट्रेन कर दिया गया। ये चिंता की बात है। इससे कई भ्रम जो है उसको मिटाने की आवश्यकता है। ये बात सही है कि इससे राजस्व भी सुरक्षित रहेगा, स्वास्थ्य भी बचाता है, युवाओं को नशे से रोकने का काम भी करता है, आर्थिक स्थिरता भी देगा, राज्यों के हिस्सों को भी सुरक्षित रखने का काम करेगा, तंबाकू उद्योग को नियमन में लाने का काम भी करेगा, राजस्थान और अन्य राज्यों के स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार लाएगा। तो ये सब काम जब अच्छे होने वाले हैं तो इसके लिए चिंता हमको ये करनी चाहिए कि किस प्रकार से हम लोगों को इसमें उपयोग करने से रोकें। इसके लिए किस प्रकार से हम ऐसा प्रयास करें कि लोग इससे और मतलब पीड़ित नहीं हो, इसके प्रति आकर्षित नहीं हो, इससे कैसे दूर हो सके, इसकी चिंता करने की जरूरत है, न कि इस पर ड्यूटी क्यों लगाई जा रही है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसमें राजनीति की बात कहाँ है। हम सबको मिलकर के ऐसी बीमारियों की रोकथाम के लिए हम सबको मिलकर के और देश सुरक्षित रहे, हमारा नौजवान सुरक्षित रहे, हमारा युवा सुरक्षित रहे, भटके नहीं, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। केवल चूंकि विरोध करना है इसलिए विरोध करने के लिए खड़े होना यह ठीक बात नहीं है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, तंबाकू के दुष्प्रभावों पर रोक लगाता है, केंद्र और राज्य दोनों को मजबूत करता है। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि यह बिल पारित किया जाए और जो देश के स्वस्थ सशक्त भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राठौड़ जी। ऑनरेबल श्री जी.के. वासन। Sir, health is wealth. Tobacco, sir, leads to a bad health. Vision of central government is very good, sir. It is excellent. People of all sections in the country are benefited because of it, sir. For example, sir, government health expenditure
as a percentage of GDP rose from 1.13% in 2014-15 to 1.84% in 2021-22. Per capita health spending tripled between 2014 and 2022, rising from 1,108 to 3,169. Sir, key initiatives because of this bill include the Ayushman Bharat program benefiting 55 crore people in this country, sir. Sir, I would like to say this is a continuing measure. It does not do any new taxation. What was earlier collected under cess will now be under central excise. Money collected, which is 41%, will also be shared with the state, sir. Sir, in the other house, there were a lot of murmurs that BD workers will be impacted. Sir, that is really not the case, sir, because the minister gave a blunt assurance that there is no change in the tax on incidents on BD. The rate remains the same with no increase even by 1 paisa, meaning the employment of poor BD workers will not be lost. Sir, I would like to kindly conclude by telling, sir, the Honorable Finance Minister has another bill for cess on pan masala, which can be used. That money can be used for even more expenditure on health and will help the health of the people, that is, the health of the country. My party, Tamil Manila Congress, Mupanar, will always support this bill, sir. Thank you. Thank you, Vasan Saab. Dr. Ajit Madhav Rao Gopchade ji. धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने यह विधेयक लाकर एक बड़ा पुण्य का काम किया है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते साथ साथ एक डॉक्टर एवं चिकित्सक के रूप में यह मेरा एक दृढ़ विश्वास है कि यह विधेयक केवल राजस्व वृद्धि या कर संशोधन का विषय नहीं है, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों के जीवन, स्वास्थ्य और देश के भविष्य को सुरक्षित करने वाला एक बड़ा कदम है। हम सभी जानते हैं भारत देश जैसा युवा देश में जहां हमारी जनसांख्यिक लाभांश की विकसित भारत की सबसे बड़ी हमारी पूंजी है, वहां तंबाकू जैसे उत्पाद एक मौन महामारी की तरह काम करते हैं। सस्ती सिगरेट, गुटखा और चबाने वाले तंबाकू युवाओं के लिए आकर्षण का द्वार बन जाते हैं और एक बार जब लत लग जाती है तो वह व्यक्ति केवल रोगी नहीं रहता, वह पूरे परिवार पर आर्थिक, मानसिक और सामाजिक बोझ बन जाता है। मैंने अपने डॉक्टर के जीवन में, चिकित्सक जीवन में ऐसे अनेक परिवार देखे हैं जहां तंबाकू का शुरुआत महज जिज्ञासा से हुई, परंतु समाप्ति लंग कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, लिवर कैंसर, आकस्मिक हार्ट अटैक, इंटेस्टाइन कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, पैनक्रियाज कैंसर, कोलन कैंसर, ऐसे बहुत सारे असमय मृत्यु इन कैंसर की वजह से हो जाता है। यह विधेयक एक खतरनाक चक्र को रोकने का एक सशक्त प्रयास है, क्योंकि इसका उद्देश्य राजस्व नहीं है, इसका उद्देश्य जनजीवन की रक्षा है। हम यह भी समझते हैं कि जीएसटी के बदलावों के बाद यदि तंबाकू उत्पादों पर कर संरचना के समान रूप से संतुलित न किया जाए तो ये उत्पाद अचानक सस्ते होकर युवाओं के हाथ तक पहले अधिक तेजी से पहुंच सकते हैं। यह विधेयक तंबाकू को महंगा बनाकर उसे युवाओं की पहुंच से दूर करना चाहता है, ताकि स्कूलों और कॉलेजों में बढ़ती खपत पर तत्काल अंकुश लगाया जा सके। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि कर बढ़ाने से अवैध व्यापार बढ़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने तस्करी रोकने के लिए जिस प्रकार की ट्रैक एंड ट्रेस टेक्निक है, सीमा शुल्क व्यवस्था है और जांच एजेंसियों को मजबूत किया है, वह यह साबित करता है कि अवैध व्यापार कर वृद्धि से नहीं बल्कि कमजोर शासन से पनपता है। लेकिन यह मोदी सरकार है, यह मोदी सरकार कमजोर नहीं है बल्कि मजबूत इरादों वाली मोदी सरकार है। तंबाकू से होने वाली आमदनी को केवल राजस्व के रूप में नहीं देखा जा रहा है। मैं माननीय हमारे सभागृह के नेता, हमारे आरोग्य मंत्री माननीय जेपी नड्डा जी का मैं मन से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आयुष्मान भारत, ग्रामीण स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और गरीब परिवारों को
स्वास्थ्य सुरक्षा में निवेश, इस तंबाकू से होने वाली आमदनी को उन्होंने राजस्व के न रूप देखकर इसमें निवेश करने का भी एक बड़ा काम माननीय जेपी नड्डा जी ने आरोग्य मंत्री के नाते से किया है, जिससे यह व्यवस्था केवल कर संग्रह नहीं है, यह कर संग्रह नहीं है बल्कि यह कर सेवा बन गई है। इसलिए मैं मोदी सरकार का मन से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हम सिर्फ कर संग्रह करने वाली सरकार नहीं है, हम कर सेवा करने वाले लोग हैं। और जन स्वास्थ्य के माध्यम से इस उत्पाद शुल्क का जो विधेयक है, एक बड़ा पुण्य का काम माननीय मोदी जी के माध्यम से पूरे देश भर में युवाओं के बीच में इसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। जहां तक किसानों की बात है, यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है, यह कानून किसानों पर बोझ नहीं डालता। सरकार ने फसल विविधीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें विकल्प, प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान किया है, अर्थात उनकी आय कम किए बिना उन्हें तंबाकू जैसे हानिकारक फसल पर निर्भरता से मुक्त करने का एक प्रयास किया जा रहा है। यह विधेयक केवल एक बजटीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक ऐसा सामूहिक संकल्प है जो कहता है कि देश का स्वास्थ्य, देश की अर्थव्यवस्था और देश के युवाओं का भविष्य, इन तीनों को आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा है। यदि यह एक कमजोर होता है तो दूसरा आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ पर कई हमारे विरोधी जो नेता है, उन्होंने बहुत सारे आरोप किए हैं, लेकिन वो आरोप करके चले जाते हैं, लेकिन सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं, क्योंकि एक बार आरोप करना और पीठ दिखाकर भाग जाना, लेकिन जब हमारे सारे साथी जब बात करते हैं तब सुनने के लिए कोई नहीं रहता है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सभापति महोदय, जैसे हमारा एक उद्देश्य है कि हमने कांग्रेस मुक्त भारत तो किया ही है, अभी तो हमको तंबाकू मुक्त भारत भी करना है। ये मोदी जी के माध्यम से हमको करना है। ये तंबाकू मुक्त भारत जो है अभी आने वाला, जैसे हमारे नड्डा जी टीबी मुक्त भारत कर रहे हैं, वैसे अभी हम सारे सदन के संसद सदस्यों को लेकर तंबाकू मुक्त भारत, और वो तो कांग्रेस मुक्त भारत तो हो ही चुका है, लेकिन अब तंबाकू मुक्त भारत करके एक सशक्त भारत, एक सशक्त हिंदुस्तान के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में हमको आगे बढ़ना है। माननीय सभापति महोदय, मैं पूर्ण निष्ठा के साथ कहना चाहता हूं कि यह संशोधन विकसित भारत 2047 का जो मोदी जी का सपना है उसके साथ जुड़ा है, जिसमें स्वास्थ्य केवल इलाज नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता है, जिसमें युवाओं की ऊर्जा केवल आंकड़ा नहीं बल्कि राष्ट्र की शक्ति है, और जिसमें कर व्यवस्था केवल संग्रह का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का सेतु है। मैं इस विधेयक का दृढ़ समर्थन करना चाहता हूं, इसलिए कि आने वाली पीढ़ी, क्योंकि उसके ऊपर लिखा होता है तंबाकू सेवन बहुत हानिकारक है, इससे बहुत दर्दनाक मौत होती है, ये सब चीजें हैं, लेकिन सब सरकार ने करना चाहिए ऐसा हम सारे लोगों ने नहीं सोचना चाहिए। फिर जनता ने भी कुछ इसमें एक जन आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सरकार करेगी तो जनता क्या करेगी। हमारे जैसे सांसदों ने भी इस जन आंदोलन में सहभागी होना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने आंदोलन करके कांग्रेस को देश से बाहर भगा दिया, कांग्रेस मुक्त भारत किया, वैसे हम सारे सांसद मिलकर तंबाकू मुक्त भारत का आंदोलन हम सारे जनता ने, भारत की जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने और सारे सांसदों ने मिलकर ये करना, ऐसा मैं इसलिए इस विधेयक का मैं दृढ़ समर्थन करता हूं। इस सदन को आग्रह करता हूं, हम सब मिलकर एक दृढ़ नीतियां बनाएं, एक दृढ़ संकल्प करें, भारत को केवल एक आर्थिक रूप से नहीं बल्कि नैतिक, सामाजिक और स्वास्थ्य दृष्टि से विश्व का अग्रणी राष्ट्र हमको बनाना है। जो मोदी जी इस विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक महासत्ता के रूप में आगे लेके जा रहे हैं, इसमें ये तंबाकू मुक्त भारत भी एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है, क्योंकि आने वाला हिंदुस्तान हमारे युवा पीढ़ी के हाथ में देने का है। हम जाते जाते हमारे युवा पीढ़ी को पूरी तरह से तंबाकू मुक्त करके, क्योंकि मैं नांदेड़ हुजूर साहब गुरु गोविंद सिंह जी की नगरी से आता हूं, वहां पर पूरा नशा मुक्त अभियान हम चला रहे हैं। इसी विषय में मैं आपसे नम्र प्रार्थना करता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था भी संभालेंगे और तंबाकू मुक्त भारत भी करेंगे। उसके साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद। श्री हारिस वीरान जी नॉट प्रेजेंट। श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में
जो मुझे आपने बोलने का अवसर दिया है, ऐसे विधेयक के बारे में मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। महोदय, केंद्रीय उत्पादन शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पर अपने विचार रखने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने देश के राजस्व ढांचे, जन स्वास्थ्य और संघीय संतुलन, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। महोदय, कोई भी सरकार का धर्म होता है वह स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में चिंता करना, और महोदय हमारी लोकप्रिय सरकार इस बात की चिंता कर रही है कि लोगों के स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखा जाए और अपने देश की भी सुरक्षा कैसे की जाए, इसके बारे में हमारी सरकार पूरी तरह से चिंता कर रही है। महोदया, दुनिया जानती है कि तंबाकू के कारण कितनी भयानक बीमारियां होती हैं। टीबी हुआ, चाहे कैंसर हुआ, चाहे गुर्दे की बीमारी हुई, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमको तंबाकू और सिगरेट आदि वस्तुओं से प्राप्त होती हैं। और महोदय, इसको रोकने के दो तरीके हैं। या तो जन जागरण चलाया जाए, जन अभियान चलाया जाए, समय समय पर सरकार करती है, विज्ञापन करती है, प्रसार करती है। दूसरा एक रास्ता ये है कि जो ऐसी वस्तुएं हैं, तंबाकू के संबंधित जो वस्तुएं हैं, उसको इतना महंगा कर दिया जाए कि उपभोग करने वाला व्यक्ति इसको खरीदने के बारे में सोचे कि हाँ, इसमें इतना पैसा लगता है। और महोदय, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि लगता है कि ये इस पर टैक्स बहुत लगा, ऐसा लग रहा है कि टैक्स इस पर लगा है। ये बात सही नहीं है कि इस पर टैक्स लगा है। बात यह है कि ये बिल्कुल उल्टा है। सबको, विपक्ष को लग रहा है कि इस पर टैक्स ज्यादा लग गया है, लेकिन मैं ये कहती हूँ इसका उल्टा है। कोई भी नागरिक तंबाकू उत्पादन कम करेगा उतना ही वह स्वस्थ रहेगा और बीमारी नहीं होगी, अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा तो बेहतर काम करेगा, और अगर वो बेहतर काम करेगा तो वह बेहतर आमदनी भी प्राप्त करेगा। तमाम वैज्ञानिक अध्ययन से स्पष्ट है कि जब कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, उससे निकलने वाले धुओं पर बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत खराब असर पड़ता है। यहाँ तक कि बच्चा अगर अपनी माँ के गर्भ में है तो भी उसके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ता है। और महोदया, 22 सितंबर 2025 को सरकार ने जीएसटी घटाई। सरकार को जीएसटी घटाने के कारण 48,000 करोड़ का घाटा हुआ, लेकिन जनता को फायदा हो, इसको ध्यान में रखकर सरकार ने राजस्व की चिंता न करते हुए जनता का भला करने के लिए इतना भयंकर जीएसटी घटाने का काम किया। और पूरे देश के आम व्यक्तियों ने, व्यापारियों ने, सबने बड़ी मजबूती के साथ ये बात कही कि घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। पूरे देश में खुशी का माहौल आया कि जीएसटी इतनी घट गई। इसके बारे में भी चर्चा होने की शुरू हुई। महोदया, तंबाकू पर कर वृष्टि लगाना, तंबाकू पर कर वृद्धि लगाना, यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तंबाकू का सेवन हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, लगभग सभी प्रदेशों में तंबाकू का सेवन प्रायः गरीब तबके के लोग ज्यादा करते हैं। सिगरेट पीना शौक की बात हो सकती है, सिगरेट पीना दिखावा हो सकता है, तंबाकू खाना भी दिखावा हो सकता है, ये नहीं है। तंबाकू को लोग ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि बड़ी आसानी से मिल जाती है। और मैंने तो कई बार ट्रेनों में देखा है, जान पहचान नहीं है, लेकिन अगर किसी के हाथ में ऐसे ऐसे हो रहा है तो बगल वाला हाथ बढ़ा देता है कि हमको दे दीजिए। ये सब लोगों ने इसको देखा होगा। इसमें कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अगर किसी के हाथ में सुर्ती मिल गई तो, और एक बार मैं ट्रेन में आ रही थी, तब मैं विधायक नहीं थी, सांसद नहीं थी, एक सज्जन सुर्ती बना, उसको सुर्ती बोलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश, सुर्ती बना रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई साहब सुर्ती आपने बड़ी अच्छी बनाई है। उन्होंने जवाब दिया कि ऐसे नहीं होती सुर्ती। उन्होंने एक गा के बताया कि अस्ती चुटकी 90 ताल, अस्ती चुटकी 90 ताल, तब देखो खैनी का कमाल। मतलब इतना ये प्रसिद्ध है खैनी कि इसके बारे में आपको मैं क्या बताऊं। लेकिन महोदया, मैं बधाई देना चाहती हूँ फिर सरकार को। हमारी सरकार, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, सबने ये संकल्प लिया है
कि पूरे भारत को नशा मुक्त करेंगे, पूरे भारत को टीबी मुक्त करेंगे, पूरे भारत को तंबाकू मुक्त करेंगे। ऐसा संकल्प हमारी सरकार ने लिया है और महोदय संकल्प लेना भी चाहिए। इतनी बीमारियां होती हैं, कैंसर होता है, तमाम इतना महंगा इलाज होता है कैंसर का। ये तो धन्यवाद दूंगी मोदी सरकार को कि इन्होंने कैंसर की जो दवाइयां होती हैं उस पर से जीएसटी को खत्म करके दवाई करने में भी सुविधा प्रदान की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सुर्ती खाएं, इसका मतलब नहीं कि हम सिगरेट पिए, हम तंबाकू खाएं। और वो कहते हैं कि अभी मैं कोई विपक्ष के साथी हमारे आदरणीय अरुण पाठक जी बैठे, वो कह रहे थे कि सरकार ने टैक्स को बढ़ा करके फायदा लेने का काम किया है, केंद्र को फायदा होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो पैसा केंद्र को आता है उसमें से 41% रुपया आपके राज्यों को भी जाता है, सारे राज्यों को जाता है 41% पैसा। तो कौन सा राज्य ऐसा है जरा वो बताकर खड़ा होकर के बताए कि हमने कहा हो कि भाई 41% का जो पैसा हमारे पास तंबाकू के टैक्स को लेकर के आया है उसको मैं नहीं लूंगा। कोई बताए तो खड़ा होकर के, कोई नहीं बताता है। तो जब हमारी सरकार अच्छा काम करना चाहती है उसकी भी तारीफ आप लोग नहीं करते हैं। महोदय, इस विधेयक के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। पहला, अनिर्मित तंबाकू दर पर कर 64% से बढ़ाकर 70% कर दी गई है। दूसरा, चबाने वाले तंबाकू पर 25% की वृद्धि करके इसे 100% कर दिया गया है। ये दोनों संशोधन केवल नीति का हिस्सा नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य की रक्षा का एक अत्यंत आवश्यक हस्तक्षेप है। तंबाकू से होने वाली बीमारियों से देश में लाखों लोग प्रभावित होते हैं और स्वास्थ्य पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। खास करके जो स्कूल हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, वो इसका सेवन ज्यादा करते हैं। ऐसे में इन करों का बढ़ाना सीधे अस्वास्थ्य कर उत्पादकों की खपत कम करने में मदद करेगा। ये सराहनीय कदम है। अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और स्वास्थ्य बिगड़ने वाले जो कारक हैं अगर उस पर शुल्क बढ़ा दिया जाए तो मैं समझती हूँ ये स्वागत योग्य कदम है। और महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी की जनहित सोच ने यह संशोधन दोहरी भूमिका निभाता है। पहला, तंबाकू की खपत कम होने से जन स्वास्थ्य में सुधार आएगा। समाप्त इतनी जल्दी? अरे अभी तो बहुत कंक्लूड कीजिए। दूसरी, उच्च कर दरों के माध्यम से सरकार का राजस्व मजबूत होगा जो आगे चलकर स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों में उपयोग हो सकेगा। इस प्रकार यह संशोधन सिर्फ कर संग्रह नहीं बल्कि लोक कल्याण को केंद्र में रखने वाली उप वित्त नीति का हिस्सा है। गरीब समर्थक और किसान समर्थक दृष्टिकोण है। यह विधेयक गरीब विरोधी विधेयक नहीं बल्कि गरीब समर्थक विधेयक है। तंबाकू का सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब परिवारों पर पड़ता है, चाहे वह बीमारी का बोझ हो, चाहे आय के नुकसान का बोझ हो या चिकित्सा खर्च का बोझ हो। इसके साथ ही सरकार किसानों के हितों की भी रक्षा कर रही है। तंबाकू किसान वैकल्पिक फसलों की ओर बढ़ सके, इसके लिए तकनीकी समर्थन, बाजार उपलब्ध कराना और कृषि विविधीकरण कराना जैसी नीतियां सरकार की प्राथमिकता में है। महोदया, यह महत्वपूर्ण बिल है, महत्वपूर्ण विधेयक है। ऐसे विधेयक पर चर्चा करना मैं समझती हूँ इसके बारे में पॉजिटिव चर्चा कर। Thank you very much, ma'am. Ma'am, the Central Excise Amendment Bill 2025 revives excise duty on tobacco products after the GST compensation cess expires, undermining GST's foundational promise of one nation, one tax. This will leave manufacturers dealing with 2 tax audits, 2 valuations regimes, double the filings, and the risk of old excise disputes, ma'am. The bill and its explanation do not clarify how the dual systems will coordinate or share data, nor do they address the added compliance burden. Ma'am, Parliament must therefore demand a clear harmonization framework through unified audits, shared portals, or transitional rules before approving this shift. Absent such safeguards, the bill risks fragmenting India's indirect tax structure and complicating compliance for the tobacco industry. Ma'am, as far as safeguards are concerned, so many members have spoken about health risks. First, e-commerce and quick commerce
platforms are delivering cigarettes and other tobacco products without any real age verification, making it frighteningly easy for children and minors to access them, and weakening the very protections built into the COPTA. Second, the 100-yard prohibition meant to keep tobacco away from the school, hospitals, etc., is simply not being enforced, whether offline or online. Digital delivery allows these products to reach children without any of the safeguards that exist in the physical world, ma'am. I urge the government to state whether it has taken cognizance of these violations and what action, through notices, penalties, or prosecution, is being taken to ensure that online platforms do not become the easiest gateways for our children to obtain tobacco. Ma'am, health risks are many, and this has been noted also by the Supreme Court, who has called this a generational threat. It's a multi-dimensional public health emergency. And my question to the government is that since divinity descended on this nation 11 years back, does divinity allow us to provide poison to the population for money? Are we not going to think about getting away with this? Ma'am, India spends far more on treating tobacco-related disease than it earns from taxing it. The economic cost of tobacco use stood at 1.77 lakh crores in 2017-18, while excise tax collections that year met barely 12% of this burden on our families and health systems. This is not just a fiscal mismatch. It reflects the human cost we can no longer afford to give, ma'am. Ma'am, if we are ready to compromise with the health of this system, I don't think we are anywhere near divinity. I would like to, ma'am, speak about lip service to divinity. If we are just calling ourselves very divine and very spiritual and talking about it, it will get us nowhere, ma'am. Shakespeare has said, nothing gets nothing out of it. So, ma'am, we are just saying nothing and earning nothing because we are in the same place, compromising with the health of our citizens. I urge the government to send this bill to the Standing Committee on Finance for thorough examination and recommendations on integration, ma'am, and also coming out with a comprehensive policy which also gives us an enlightenment of what are the health risks, how much are we spending on tobacco use inflicted diseases, and how much we are earning out of it. If we make a comparison, I think it will show us that if we do away with this revenue, the health of the nation will progress, but we will also go towards financial positivity in a few years, ma'am. Thank you. Honorable Member Shri Harish Biran. Thank you, Madam. Madam, we are discussing the Central Excise Amendment Bill of 2025, which is an indirect taxation. What's the concept of taxation, particularly direct taxation, like income tax and all? There will be different slabs for different revenue people. Like till 4 lakhs, there won't be any taxation. From 4 to 8 lakhs, there will be 4 to 8 lakhs, it will be 5%. 8 to 12 lakhs, it will be 10%. Like. Therefore, the concept of taxation is that the people who earn more revenue will have to incur more tax. Now, unfortunately, in this particular bill, the increase in duty on unmanufactured tobacco from 64% to 70% and chewing tobacco from 25% to 100% will disproportionately affect the poorest and the most vulnerable sections of the society who are more likely to consume these. Now, these are all cheaper and traditional forms of tobacco, ma'am, and these are consumed by these vulnerable sections of the society. So a hike of 400% on chewing tobacco is regressive, making the poor bear the brunt of the sin tax. Now, I can understand the sin tax concept. Sin tax concept is actually brought in so that the health as well as the welfare of the society can be managed accordingly by putting additional burden, additional tax on these particular products.
But problem, madam, is this. All measures to promote these products are actually in place now. The promotion of these products through advertisements, huge, big actors coming in, huge amount of money is being spent. So there is no restriction, there is no regulation as far as the promotion of these particular products are concerned. Now, while the government claims that this measure targets consumption, not production, the immediate hike in duty on unmanufactured tobacco from 64% to 70% directly impacts the primary product sold by the farmers. This will naturally suppress the market for the goods regardless of diversification efforts. Now, madam, the increase in duty on BD tobacco threatens the livelihood of lakhs of BD rollers who are largely women from vulnerable economic backgrounds. The claim is that this is not an attack on BD workers, is undermined by the economic reality of reduced demand due to higher prices. Where is the dedicated welfare and reskilling package for these workers, madam? Now, madam, if they had set apart a portion of this particular taxation for the purpose of relocation of these vulnerable section, who are actually the manufacturers and consumers, then one could have understood. Now, who consumes these products? Not the wealthy, not the middle class. It is the poorest laborers, migrants and rural workers. When the government claims this is a public health measure, why is the brunt of the punishment falling on the poorest? Now, madam, if public health were the real priority, why is the harshest taxation applied on the cheapest products used by the vulnerable, while the more affluent users of premium cigarettes see a smaller proportional burden? The truth is simple. This is revenue first and not health first. Thank you, madam. Honorable Member Shri Amarpal Maurya. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय। भारत आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नित नए संकल्पों को पूरा करने के लिए जाना जाता है, और जब मनुष्य के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि की जब बात आती है तो नरेंद्र मोदी सरकार उसको और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के पूरे देश को सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने के लिए एक जो उन्होंने मानक तय किया है कि देश का चाहे वो किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति हो, सबके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करना इस सरकार का नैतिक दायित्व है। सरकारें पहले भी रही हैं और बहुत सारे सुधारों की जो जरूरत थी, उन सुधारों पे काम करने की जो आवश्यकता थी, देश की आजादी के बाद से 60 सालों तक 70 सालों तक इस देश के अंदर उन सुधारों की तरफ ना तो ध्यान किसी का गया, और ध्यान इसलिए नहीं गया महोदय कि व्यक्ति को उससे कोई लगाव नहीं था। अभी बहुत सारे जो है हमारे माननीय विपक्ष के सांसदों ने भी कहा कि ये तो जो है जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों को ज्यादा दिक्कतें होने वाली है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि क्या उनके जीवन के साथ में खिलवाड़ करना कहां न्याय संगत है? अगर उनके जीवन की रक्षा को, उनके जीवन को बचाना है तो किसी भी स्थितियों में जाने की आवश्यकता है। और नरेंद्र मोदी सरकार आज केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 को जो तंबाकू उपभोग में कमी लाने हेतु जन स्वास्थ्य प्रयासों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ये प्रस्तुत किया गया है। और ये विधेयक जो सिगरेट तंबाकू केवल एक आदत नहीं है, ये एक धीमा जहर है महोदय। यह जहर हर दिन हमारे समाज को, लोगों को बीमार करने के लिए, कैंसर जैसी बीमारी जो भयावह बीमारी, कभी जब उन अस्पतालों में जाकर के देखने का अवसर प्राप्त हो तो जरूर वहां पर जाने का जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। तब अनुभव होता है, तब एहसास होता है कि इस सिगरेट और तंबाकू के धुएं से, बीमारी से किस प्रकार की स्थितियां, वो जो गरीब परिवार है जिनके घर में इलाज की व्यवस्थाएं नहीं है और जिनका जीवन परिवार एक वक्त की रोटी के लिए सारा दिन मेहनत और मजदूरी करने में चला जाता था, उस परिवार का मुखिया जब बीमार हो जाता था तो उसको जो है दवाई के लिए, इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में ही संकल्प लिया था कि देश के जो है गरीब हो या अमीर हो या किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो,
स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से ये उनके जीवन की प्राथमिकता थी और उस प्राथमिकता में उन्होंने इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के एक बड़ी योजना पे उन्होंने काम किया। आयुष्मान भारत के माध्यम से लोगों को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था को करने का संकल्प पूरा किया। और इतना नहीं महोदय, आपने हम सब ने भी देखा है कि व्यक्ति को जब सरकार के माध्यम से किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त हो जाती है तो उसके जीवन में एक जीने की संकल्प की शक्ति 2 गुना बढ़ जाती है। और जब तंबाकू की बात करते हैं, अभी हमारे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि इसमें जो है किसानों को नुकसान होगा। महोदय, मैं उस परिवार का सदस्य हूं, उस परिवार का बेटा हूं। मैंने अपने जीवन, मेरे घर में आजादी के पहले से तंबाकू की खेती होती थी। लोगों को शायद तंबाकू का पेड़ कहां होता है, नीचे होता है, ऊपर होता है, यह भी नहीं पता होगा। वो बात करते हैं तंबाकू के विषय में, किसानों का नुकसान। ये यहां पर गुमराह करने का काम करते हैं विपक्ष के लोग। 60 सालों तक देश के समाज के लोगों को गुमराह करके अपनी सत्ता पर काबिज होने करने का जो पाप किया है, उस पाप की सजा जनता ने इनको जो है आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दे करके दिखाया है। और नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि देश के अंदर कोई भी ऐसा जो है प्रश्न नहीं है जिसको हम हल करके नहीं दिखाएंगे। उन्होंने जीवन में लोगों ने संकल्प किया है कि आज नहीं तो कल निकलेगा, हर प्रश्न का हल निकलेगा। मन में साहस विजय जो होगी तो मरुस्थल से भी जल निकलेगा। ये जो लोग के संकल्पना कर रहे हैं कि जो है उत्पाद में जो है आपने जो है टैक्स बढ़ा दिया है, तो इससे जो है जनता को जो है क्या फायदा होगा, लोगों को क्या फायदा होगा? बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। जब उन्होंने गैस सिलेंडर बांटे थे तब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। जब उन्होंने शौचालय बनाए थे तब भी लोगों ने मजाक उड़ाया था कि जो है गैस का सिलेंडर दे देने से क्या हो जाएगा। और जब उन्होंने कोविड जैसे महामारी में वैक्सीन का निर्माण करके पूरे देशवासियों को निःशुल्क वैक्सीन देने का काम किया था, तब भी विपक्ष के नेताओं ने मोदी वैक्सीन को प्रचारित करके पाप करने का काम किया था, लोगों की जीवन के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया था। और ये खिलवाड़ ये देश देखता है, ये देश कभी माफ नहीं करने वाला है। किसानों की बात करते, मैंने कहा मैं किसान का बेटा हूं, मैंने तंबाकू की खेती हमारी पीढ़ियां करती आई थी, हमने भी किया था। और इस जो है प्रावधान में, इस विधेयक में उत्पादनकर्ता पर, किसानों पर कोई टैक्स नहीं है। जो उपभोक्ता है उसी के ऊपर टैक्स लगाया गया है, जिससे गरीब के विकास की योजनाओं को जो है काम किया जाएगा। ये इस प्रकार के अफवाह फैलाने की आवश्यकता क्या है? अरे विपक्ष का काम ये तो नहीं हुआ कि हर विधेयक का विरोध करना है। आप सुझाव दीजिए। आपको लगता है कि हाँ इसमें ये और एडिशन हो सकता है, तो ये पूरा सदन जो है आपके सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन असत्य बोल करके देश की जनता को गुमराह करने का कोई अधिकार नहीं है। आज देश के समाज में जो जनता है वो देखती है सारा सब कुछ। और जिस परिवार के साथ में ऐसी वेदनाएं हमने देखा है, इससे जो है सिगरेट और तंबाकू के एडिक्शन से लोगों के जीवन जो है समाप्त हो गए हैं। उनके परिवारों को उजड़ते हुए अपनी आंखों से देखा है। और उस परिवार को नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके जीवन में कैसे खुशहाली आ सकती है, ये दर्द अगर कोई सोच सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सोच सकते हैं। कहावत ने जिसके घर नहीं फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। ये समाज आज जो है उन लोगों को चुनौतियों के लिए सामना करने के लिए तैयार रखने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि देश के अंदर किसी भी प्रकार की चुनौतियां आई, ये पूरा देश जो है मिलकर के लड़ा था। चाहे वो प्लेग की बीमारी आ रही हो, कोविड की बीमारी आ रही हो, चाहे जो है वो पोलियो की बीमारी आ रही हो, तो चाहे टीबी की बीमारी आ रही हो, इस तंबाकू और सिगरेट से भी जो है लड़ने का साहस भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाएगा। इसको भी पूरा करेंगे, ये संकल्प है जीवन का। और जीवन का संकल्प अगर नरेंद्र मोदी सरकार जब तय करती है तो उसको पूरा करने का लक्ष्य भी प्राप्त करती है। ये 2014 के संदर्भ के साथ ही और आज तीसरे टर्म की सरकार जो हमारी प्रारंभ हुई है तब से हमने करके दिखाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश किया है। 2014 तक देश में केवल 7 संस्थान थे एम्स के,
लेकिन अब 23 स्वीकृत हो चुके हैं। इसी तरह मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 2 गुना की गई, क्योंकि जब डॉक्टर रहेंगे तभी स्वास्थ्य के संदर्भ में उनकी रक्षा की जा सकती है। डॉक्टरों की संख्या बढ़े कैसे? तो मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ा गई। मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, उस उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आज 42 जिलों में जो है मेडिकल कॉलेज जो है पूरा हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता में है कि व्यक्ति का जीवन कैसे सुरक्षित रह सकता है। और इसके अलावा आयुष्मान योजना के तहत करोड़ों लोगों को आज मुफ्त में सस्ते इलाज की व्यवस्था की गई है, जो अब तक 9 करोड़ से अधिक मरीजों का इलाज इसके अंतर्गत हुआ है महोदय। और ये मोदी सरकार इस जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को हटाकर उसके बदले जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बदलाव करना, राज्यों के हिस्सों की जो बात कर रहे थे, राज्यों के हिस्से को भी हमारे माननीय सदस्यों ने उसको दोहराया है। मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे वर्तमान में जो कुछ मानवीय पहलू भी हैं, जैसे स्वास्थ्य पर सरकार का खर्च घटता है। जब हम तंबाकू के प्रति, सिगरेट के प्रति जब आह्वान करते हैं कि इसको छोड़िए, तब जो है स्वास्थ्य का जो बजट होता है वो कम होता है। तंबाकू जनित बीमारियों के इलाज में बहुत महंगी होती है। देश के अस्पतालों में लाखों करोड़ रुपए केवल तंबाकू की बीमारियों से खर्च होते हैं महोदय। और जब लोग तंबाकू का उपयोग कम करते हैं तो अस्पतालों का बोझ घटता है, डॉक्टर और संसाधन अन्य बीमारियों पर ध्यान दे पाते हैं। दवाइयां और इलाज का जो पैसा होता है बच्चों की पढ़ाई के जीवन में काम आता है। सरकार का पैसा उनके विकास की योजनाओं में खर्च होता है महोदय। और इतना ही नहीं, जब नागरिक स्वस्थ हो जाते हैं तो ये देश जो है स्वस्थ होता है और वो ज्यादा काम करके भारत के विकसित सपने को साकार करने में मदद करते हैं। और जो काम का दिन उनका छुट्टियों में खराब होता था उसकी बचत होती है। और कर्मचारी हो या मजदूर हो, वो स्वस्थ होते हैं तो अपने जीवन में अपने परिवार के लिए ज्यादा जीविकोपार्जन करने की क्षमता हासिल करते हैं महोदय। मैं एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ये जो कर की व्यवस्था है, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि देश के अंदर कर की पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि जैसे फूल से जो है मधुमक्खी रस ले लेती है लेकिन किसी भी फूल का कोई नुकसान नहीं होता है, ऐसे नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां हैं कि देश के अंदर कर की व्यवस्था के साथ में देश के जो है जनता के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके, उस रक्षा में हम सब सहभागी बने। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सदानंद महालू सेठ तानवड़े जी। Thank you, Speaker, sir. The Central Excise Amendment Bill 2025 is a necessary fiscal and public health intervention aimed at ensuring that the GST compensation cess is phased out. As was agreed collectively by states, tobacco products do not suddenly become cheaper and more accessible. The government intention is not to impose new burdens, but to preserve the existing deterrence against harmful consumption and maintain stability in pricing to prevent a rise addiction, especially among the youth. Tobacco remains among the leading causes of non-communicable diseases, including cancer, heart disease, and respiratory illness, creating enormous social and economic cost for families, particularly for lower-income households who part with their savings merely to access treatment. International experience shows that price-based deterrence through taxation is one of the most effective tools to curb tobacco usage. This legislation reflects that evidence-based approach. Higher and stable taxation directly protects adolescents, students, and economically vulnerable population who are the most price-sensitive and therefore the most likely to initiate tobacco use when products become cheaper. Cheap tobacco is not about personal liberty. It is about creating lifelong addiction pathway for new generation. The bill fully respects the structure of fiscal federalism. The GST compensation cess was by design a time-limited instrument. Its conclusion does not dilute the rights of states. Under the Finance Commission framework,
states continue to receive 41% of the divisible pool, a historic increase implemented under the Modi government, ensuring fiscal stability at the state level while maintaining national revenue balance. For Goa in particular, the legislation assumes special significance. The state is witnessing an upward trend in cancers and lifestyle disease linked to tobacco consumption, increasing pressure on district hospital and tertiary facilities including the Goa Medical College. By preserving tobacco price deterrence, this bill strengthens both prevention and long-term sustainability of healthcare system that serve Goan families. As a tourism-driven economy, Goa also bears the responsibility of promoting healthier social environments for residents and migrant workers, like especially in hospitality, transport, and service sectors, where occupational stress often increases vulnerability to tobacco addiction. Preventive policy today reduces future health burdens both for our state and the country. Importantly, this bill must not be misunderstood as being anti-farmer or anti-worker. The intervention target consumption, not livelihoods. Crop diversification schemes continue to support tobacco farmers in transitioning toward alternative and sustainable agriculture. With over 1 lakh acres already shifted nationally, providing that public health protection and farmers' welfare can advance together. Concerns regarding illicit trade have also been directly addressed. The government has strengthened the track and trace system, implemented digital tax stamping, and enhanced operational coordination between customs, GST authorities, and the Directorate of Revenue Intelligence. These measures have already resulted in record tobacco smuggling seizures, indicating growing enforcement capability under the NDA government. The bill aligns India with global public health standards recommended by the World Health Organization and other international best practices, ensuring we do not lag behind developed nations in safeguarding public health. Ethically, the legislation also reflects balanced governance, collecting revenue from harmful non-essential products while easing burden on the middle class and keeping taxes low on essential commodities. It is both economically prudent and socially responsible. Or as India marches toward the vision of Vikasit Bharat, health protection must walk alongside economic growth. Addiction weakens productivity, disrupts families, and drains financial stability. Investing in prevention today preserves a healthier, stronger workforce tomorrow. The Central Excise Amendment Bill 2025, therefore, stands not merely as a tax measure, but as a strategic public health intervention, a fiscal stabilizing instrument, and statement of ethical governance, one that safeguards our youth, strengthens our healthcare institutions, respects revenue, and advances the collective goal of building a healthier India. Thank you, sir. Thank you. Shri Mahendra Bhatt ji. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 के पर बोलने का अवसर मुझे प्रदान किया और मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, इसका उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 में संशोधन करना है। यह धारा 3 के तहत लगाया जाता है। इससे भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रहित करने का प्रावधान है। विधेयक का मुख्य उद्देश्य तंबाकू के उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरों में संशोधन है। तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी बढ़ने से कर राजस्व की रक्षा होगी। सरकार के इस विधेयक का उद्देश्य जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद टैक्स को संरक्षित करने के लिए सरकार को तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाने से राजकोषीय गुंजाइश प्रदान करना है। इसका उद्देश्य जन स्वास्थ्य और राजस्व को मजबूत करना। सरकार ने तंबाकू तथा तंबाकू उत्पादों जैसे हानिकारक वस्तुओं पर 40% जीएसटी लगाकर साथ ही उत्पाद शुल्क में वृद्धि करके जन कल्याण की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। हानिकारक उत्पादों के उपयोग से हतोत्साहित करना इसका उद्देश्य है तथा महत्वपूर्ण सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए राजस्व बढ़ाना उद्देश्य है। युवाओं और कमजोर समुदाय के बीच तंबाकू के समर्थन को कम करने
एवं स्वयं बुलाए स्वयं अर्जित रोग से मुक्ति के लिए इस विधेयक का लाना बहुत नितांत आवश्यक हो गया था। जब सरकार मध्यम वर्ग के सभी लोगों के लिए उनके कर को बोझ को कम करती है, गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं संचालित करती है, तो तंबाकू जैसे हानिकारक और गैर जरूरी उत्पादों से राजस्व संग्रह विवेकपूर्ण और न्याय संगत है। तंबाकू से कैंसर, हृदय, उसकी चर्चा पूर्व में आई है, हृदय रोग, फेफड़ों के रोग, मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। हड्डियों का घनत्व को कम हो जाता है, फ्रैक्चर का खतरा बढ़ता है, पेट में अल्सर बढ़ता है। सिगरेट पीने से फेफड़ों का कैंसर 90% फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं। COPD की बीमारी 85 से 90% सिगरेट पीने से होती है। हृदय रोग और अस्थमा जैसे रोग इससे होते हैं। महोदय, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में तंबाकू निर्यात से देश को 12,589 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। पिछले 5 वर्षों में 87% वृद्धि निर्यात में हुई है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक है। और इस नाते तंबाकू का अगर हम उससे निर्मित सिगरेट और सबका रेट बढ़ाते हैं तो विदेशों में इससे हमारे राजस्व की वृद्धि होगी। ये एक अच्छा निर्णय है। गुजरात राज्य सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादक का राज्य है और अभी जो कीमत थी 238 से 250 रुपए पर क्विंटल सिगरेट का रहा। तंबाकू, पान मसाला में 28% GST को 40% किया गया। यह विधेयक सिगरेट, सिगार, हुक्का, जर्दा समेत अन्य तंबाकू उत्पादों पर शुल्क लगाकर GST क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेगा। साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक पान मसाले पर लगाए जाने वाले क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन एकत्र करना है। जुलाई 2017 में GST की शुरुआत हुई। उस समय राज्यों को होने वाले नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति उपकर लगाने की व्यवस्था थी जो 5 वर्षों तक के लिए ही थी, लेकिन कोरोना के बाद इसे 31 मार्च 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। इससे कोविड-19 की अवधि के राज्यों के नुकसान की भी भरपाई होने की संभावना है। अनियमित तंबाकू उत्पादों और तंबाकू के विकल्पों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में वृद्धि होगी। अनियमित तंबाकू का शुल्क 64% से बढ़ाकर 70% होगा। एक्ट में प्रति 1000 सिगरेट पर 200 रुपए से 775 के बीच का उपचार शुल्क लगता था। वही अब बिल के तहत बढ़ा हुआ शुल्क प्रति 1000 2700 से 11,000 के बीच रहेगा। चबाने वाले तंबाकू पर शुल्क 25% से बढ़ाकर 100% रहेगा। हुक्का या गुटखाऊ तंबाकू पर 25% से बढ़कर 40% होगा। पाइप और सिगरेट के स्मोकिंग मिक्सर पर शुल्क 60% से बढ़कर 325% निर्धारित किया गया है। मान्यवर, सस्ती सिगरेट, गुटखा खाकर आज की जो पीढ़ी है, नई नवजात पीढ़ी है, इसको इस लत से बचाने के लिए एक बहुत सकारात्मक प्रयास है। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि भारत में तंबाकू सेवन का जो प्रचलन 83.8% है, इसमें निश्चित रूप से इसके द्वारा कमी आएगी। यह एक रणनीतिक पीढ़ीगत निवेश है जो देश के एक स्वस्थ, अधिक उत्पादक जनसंख्या सुनिश्चित करता है। महोदय, मैं पुनः बधाई देता हूं और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद। श्री धनंजय भीमराव महादिक जी। धन्यवाद उपसभापति जी। आपने मुझे केंद्रीय उत्पादक शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पर बोलने का मौका दिया। सभापति जी, ये बिल तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने के लिए लाया गया है, जिसमें तंबाकू का उपभोग और उपयोग में कमी आए, जिससे लोगों का स्वास्थ्य सुदृढ़ रहे, इसकी चिंता की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सिन गुड्स, पाप गुड्स जो शरीर के लिए हानिकारक है, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाना है। सर, पहले अनिर्मित तंबाकू पर 64% टैक्स था, अब उसे बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। सिगरेट पे 250 प्रति 1000 इतना टैक्स था, उसे बढ़ाकर 4500 कर दिया गया है। चबाने वाला तंबाकू 25% से बढ़ाकर 100% किया गया है। सर, 22 सितंबर 2025 से
जो प्रभावी जीएसटी किया गया 2.0 उसके सुधारों के अंतर्गत सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पादक जैसे सिन गुड्स पर कर को 40% तक बढ़ाया गया है। तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क से प्रस्तावित वृद्धि, जिसका उद्देश्य जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ मिलकर ये उपभोग को उल्लेखनीय रूप से हतोत्साहित करने के लिए अपेक्षा रखता है। सर, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ सबका विकास जो नारा है उसे भी समर्थन करता है कि इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित मोदी सरकार ने तंबाकू और तंबाकू उत्पादों जैसी हानिकारक वस्तुओं पर 40% जीएसटी लगाकर साथ ही उत्पादक शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि करने का जन कल्याण की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। इन सुनियोजित राष्ट्र कोषीय उपायों को उद्देश्य हानिकारक उत्पादकों को उपभोग को हतोत्साहित करना और साथ ही महत्वपूर्ण सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यय के लिए राजस्व बढ़ाना है। सर, जन स्वास्थ्य के लिए भी इसमें चिंता की गई है, जैसे कि सरकार अपने वादे के अनुसार जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर रही है। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पाद अचानक सस्ते और अधिक सुलभ न हो जाए। कीमतों में गिरावट और उसके परिणाम स्वरूप खपत में वृद्धि को रोकने के लिए प्रस्तावित 40% जीएसटी और उत्पादक शुल्क में इसकी अनुपात में वृद्धि आवश्यक संतुलनकारी उपाय में रूप में काम करेगी। ये सुविचारित दृष्टिकोण मूल्य स्थिरता बनाए रखता है, युवाओं और कमजोर वर्गों को तंबाकू के बढ़ते जोखिम से बचाता है और राजकोष पर बोझ डालने बिना जन स्वास्थ्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। संक्षिप्त में यह सुधार निवारक क्षमता को बनाए रखता है, राजस्व तटस्थता सुनिश्चित करता है और राष्ट्र के स्वास्थ्य के हितों को सर्वोपरि रखता है। इसके उपवित्त को लोक कल्याण करने के लिए भी उपयोगी माना जाता है। ऐसे समय में जब सरकार मध्यम वर्ग पर कर का बोझ कम कर रही है और कमजोर परिवार को मुफ्त राशन प्रदान कर रही है, हानिकारक गैर जरूरी उत्पादों से राजस्व प्राप्त करना विवेकपूर्ण और न्याय संगत दोनों है। तंबाकू पर बढ़े हुए उत्पादन शुल्क के माध्यम से एकत्र किया गया प्रत्येक रुपया सीधे राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देता है। वर्तमान सरकार इसके अंतर्गत देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे एम्स, जिसकी संख्या 2014 में सिर्फ 7 थी, वो बढ़कर आज 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2013-14 में 387 थी, उसको 2025-26 में दुगनी होकर 808 बनाया गया है। इससे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा पेशेवरों को तक पहुंच बढ़ रही है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक रोगियों को पहले ही लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए का मुफ्त का रियासती उपचार मिल चुका है। राज्यों के राजस्व को नुकसान पहुंचाए बिना ये स्थिरता लाता है। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर से पुनर्निर्धारित केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बदलाव राज्य के हिस्से में कमी नहीं बल्कि एक प्रशासनिक पुनर्निर्माण करता है। क्षतिपूर्ति उपकर हमेशा एक समयबद्ध तंत्र था जिससे सभी राज्यों ने सहमति व्यक्त की थी। सर, धन्यवाद। सर, धन्यवाद। डॉक्टर शिव कुमार मित्तल जी। सर, वो हर सिगरेट के पॉकेट पे लिखा होता है टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, पर सर मेरा कहना है इट इज इंजूरियस टू नेशन। टोबैको इज इंजूरियस टू नेशन। मैं कहना चाहूंगा सर, फक्र होता है ऊंचाइयों को छूने में, बस उसमें दफन किसी की लाश ना हो। जुनून हो मेहनत से आगे बढ़ने का, बस धुएं में जकड़ी कोई दास्तान ना हो। सबको अपने सपने का जहां मिले, बस आंसू में डूबी किसी की मां ना हो। फक्र होता है ऊंचाइयों को छूने का, बस उसमें दफ किसी की लाश ना हो। सर, हम टोबैको से 75,000 रुपये सालाना कमाते हैं या कमाने जा रहे हैं।
पर सर तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम पे सिर्फ 50 करोड़ से खर्च करते हैं, यानी टोटल कमाई का 0.07%। इतना कम क्यों? सर हमारे क्रिकेटर्स, हमारे सेलिब्रिटीज जो खुद को रोल मॉडल कहते हैं, हम लोग समझते हैं, लोग युवा समझते हैं, वो सूरोगेट ऐड के जरिए इलायची के नाम पर जहर बेचते हैं। सर अभी एक नया बिल अलग से आ रहा है, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी, बहुत बढ़िया, हम इसका समर्थन करते हैं। जब वहां आ सकते हैं तो यहां भी हम इस सेस का आम आदमी पार्टी समर्थन करती है, लेकिन मैं चाहूंगा, अभी मेरे इस तरफ के साथियों ने बोला कि ये जो पैसा आएगा ये तंबाकू की रोक, दवाइयों की, जो बीमारियों से रोकथाम के लिए खर्च होगा, मुझे लगता है इस सभी पे सारे सहमत हैं हम। तो सर मेरी माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो ये सेस लगा रहे हैं हम इसका नाम हेल्थ सेस अगेंस्ट तंबाकू क्यों ना कर दें, जैसे हम हेल्थ सिक्योरिटी अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी लेकर आ रहे हैं। सर सिर्फ आधा मिनट लूंगा मैं। सर 75,000 करोड़ या जितना भी आएगा वो सारा इस खाते में डाला जाए, ये मेरी पुरजोर निवेदन है मंत्री जी से। सर जो ट्विन पैक का नया कल्चर चला है एडवर्टाइजमेंट्स का, उस पर सख्ती से नियंत्रण लगे ताकि बच्चों को बेवकूफ ना बनाया जा सके। सर सिगरेट की जो एड है उस पर पूरी तरह से नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। एक सर छोटी सी बात, एक सर बड़ी अच्छी स्कीम है भारत सरकार की, केंद्र सरकार नेशनल हेल्थ मिशन पर राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन देती है जो अच्छा काम करते हैं, जो तंबाकू की रोकथाम में मदद करते हैं। सर वही चीज यहाँ लागू की जाए। और ऐसे ही हो गया सर, आखिरी लाइन है, फाइनेंस कमीशन जो है, जैसे परिवार नियोजन में जो राज्य अच्छा काम करे उनको विशेष अनुदान देता है, ऐसे ही विशेष अनुदान वो स्टेट जो तंबाकू की रोकथाम करते हैं उनको भी दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती निर्मला सीतारमन जी टू रिप्लाई द डिस्कशन। Thank you very much, sir. After the introduction of the bill, I understand about 27 honorable members have spoken on the subject. While just giving a broad introduction to what this exercise is about, I'll move to respond to many of the questions which honorable members have raised. So the Central Excise Act of 1944 has a schedule, fourth schedule, in which the rates are prescribed. And within the fourth schedule, there is a section 4 in which the rates of the tobacco products are mentioned. Now, with the levy of the cess is no longer there under the GST scheme of things, meaning the compensation cess is no longer going to be levied. There was a necessity to get back the excisable items back into the central government's Excise Act. Just to explain it a bit better, sir, when in 2017 GST was brought in order to give states the compensation which was agreed upon so that they will be able to have their income supplemented just in case it fell from a assured level, the central government had said that it shall, just as a token, collect very minuscule amount for those items which come under the central excise, such as tobacco products, and completely gave it to the GST to collect compensation cess because they were under the 28% rate, and over and above that, compensation cess was also being collected. Even at the point in time of introduction of GST in 2017, by law it was provided that this compensation will be given for the states
for 5 full years. Now, at the end of the 5 full years, compensation cess was to come to a close. Now, even before the 5 full years could be completed, unfortunately, we had the COVID coming, and during that time, no revenue could be raised, but yet the compensation had to be given. So, it was decided that there would be a loan arrangement made in which the central government would arrange it and have it back to back given to the states. And that loan will also get paid back through the collection of the cess, compensation cess. Meaning, till 22, you would have to give them the compensation, give the states the compensation through the collection which comes from the compensation cess. After that, because during the period of 5 years itself, we had to borrow money to pay this compensation cess, we had to extend compensation cess collection till March 26. Or if we were able to pay back all the loans and interest which we borrowed to pay the states the compensation during and immediately after the COVID period, if we are able to pay that back well before March 26, we will close collecting compensation cess. Now, in the last GST Council, this was discussed in detail, and as was agreed earlier also, the compensation cess collection will come to a stop, probably end of December. This was very clearly discussed, and now that the compensation cess comes to a close, the central government, which gave the items under the cess, such as the tobacco products, to the GST Council to raise revenues for compensation, naturally is got to be brought back. Let me assure here itself straight away that the tobacco products will still be taxed under the demerit category at 40% in the GST frame of things. They will still be taxed at 40%, but there will not be a compensation cess. But when it was under the compensation cess, like now till December 31st probably, they were under the highest rate available then, 28%, and over and above which a compensation cess was added. Together, some of the items in cigarette would have been at 53%, some were at 60, some were at 72, some were at even 88%. Now that the 28% has gone away from GST, all those demerit goods have gone to 40% tax. That's the structure in the GST. Now, therefore, the items cannot be taxed beyond 40% even if they are demerit. But the incidence of tax on tobacco and tobacco-related products have therefore come down. You have no compensation cess. The highest rate that you have in GST is 40%. And as a result, it gives an impression that the government has allowed lesser tax on tobacco, and therefore it's going to become affordable. The intent is not that, sir. So within the GST scheme of things, it continues to be at the highest rate. But now that the compensation cess cannot be collected and we have to come back to excise, the Central Excise Act will now back again get the cigarette items, and retaining largely the incidence of tax, we are imposing the excise on these demerit goods. That's the sum and substance of the story behind why now excise is coming in. So, in general, I also want to highlight the fact, since the intent is not to tax tobacco and tobacco products lesser than what prevailed earlier, it's important for us and this august House to recognize the fact that during the GST period, tax on tobacco-related products, even with the cess being there, could not reach the benchmark which the WHO sets every year. Meaning, they have what is called as tobacco
affordability index of tobacco products. They have an index called affordability index of tobacco products. They monitor the rates which prevail all over the world and point out where the rate is well below the benchmark they set. And therefore they say you're making tobacco affordable, meaning people are not being disincentivized from buying cigarette unless you keep it at a certain level. And there are several countries which keep changing the tobacco rate, linking it to inflation, and even otherwise, annually they keep changing the rate so that the rate is itself a disincentive so that people don't end up buying more cigarettes because now that it's become cheaper. And in that context, 80 countries revise tobacco taxes annually, as I said, linking to inflation and also looking at their periodic excise schedules. Australia increases tobacco's excise automatically by CPI plus an additional 12.5%. New Zealand does the same exercise plus 10%. Philippines, Turkey, South Africa, all of them also do an automatic escalating way of pricing tobacco products. EU member countries do 60% over and above the CPI on a weighted average basis, and many countries do exceed 70 to 75%. So what we need to do in India is to see if we are making tobacco affordable, which we don't want to. We want to make sure there is a deterrent, and therefore at the moment, India's total tax incidence on cigarette is approximately 53% of the retail price, which is substantially lower than the World Health Organization's recommended benchmark of 75% of the retail price, or it is even more than 75%. So, as I said, many countries impose over the CPI 80, 85%, 75 to 80%, and so on. So we want to keep that in mind, and therefore the rate fixation has happened, keeping WHO's benchmark as well, and making sure that we don't make cigarettes affordable. But here, there's one element. I think one of the honourable members has spoken in brief about BD, but I want to highlight the fact, sir, that whilst doing this, even BD comes back to excise. But there is no change in tax incidence of BD. Considering the fact that the workers who roll BD come from a lower economic strata of our country, we had made sure that nothing goes to hurt the livelihood propositions but of the BD rollers, but equally continuing with very many schemes which will give them health awareness. I'll read that out a bit to highlight, sir. When I say there's no change in the tax incidence of BD, I just want to put it on the record here so that honourable members will appreciate. In the current regime, which will continue till the end of this month, because of the compensation cess, which is the scheme of things since 2017 when GST was brought in, the GST rate, as I said, on BD is 28%. And there is this NCCD, which is a calamity-based collection that we do. For handmade BDs, for every 1,000 units, we charge 1 rupee. If it is a machine-made BD, then for every 1,000 units, we charge 2 rupees and not more. Together with that, as I said, basic excise duty continued as a token gesture even during the GST regime when the compensation cess was being collected. The central excise was kept at a very nominal rate. And how nominal is nominal? 5 paisa per 1,000 units. Not 5 rupees. 5 paisa per 1,000 units, which is man-made, and 10 paisa per 1,000 units if it is machine-made. So this is what prevails currently.
exactly what prevails now is what is going to prevail after excise comes into play. So the proposed regime will have BD at 18% as recommended by the 56th GST Council. That is why when the next generation GST was announced, a lot of people said, what have you done? GST BD rate was at 28. Over and above that, there was some cess. Now, minuscule cess. But over and above that, so 28% is the rate at which BD was and continues to be till 31st. But we had to move it along with very many items because 28 is not available anymore as a rate under GST. So every item moved to 18 unless it was a sin item which went to 40. Cigarettes went to 40. BD did not go to 40. It, on the contrary, moved to 18 because there was no more 28. So from 1st January or whenever this new thing comes into play, in GST it will be at 18. So a lot of people question saying you've reduced the price because you've reduced the tax on BD. But that is because we didn't have 28, so it went to 18. The NCCD portion continues to be the same as 1 rupee for every 1,000 BDs, handmade, and 2 rupee for every BD for 1,000 units if it is machine made. That continues as it is. And the basic excise duty, where it was 5 paisa per 1,000 and 10 paisa for per 1,000 machine made, will be at 10%. Together, the incidence on BD will be the same. It shall not worsen the situation or it shall not have a negative impact on BD rollers. That's an upfront statement I want to offer. So now I come to specific points which many members have raised. I want to address them. Pramod Tiwari ji, while speaking, apparently has said that the bill is silent on tobacco farmers. And what will happen to the workers who are working in the tobacco related, in the tobacco cultivation and so on. And also he has observed that this is against devolution. I want to first correct this impression, sir. This is an excise duty. It's not a cess. We'll talk about cess tomorrow, day after, whenever it comes. But this is an excise duty. This excise duty, by the very nature of taxable pool, will join the taxable pool and it will be devolved per the Finance Commission's recommendation to the states. It is not against devolution, it joins the taxable pool. That is one thing. Second, sir, there are several schemes from the government to take care of tobacco farmers. Now, this scheme has been on since 2015-16. It's called Crop Diversification Program, Rashtriya Krishi Vikas Yojana, and it runs in 10 states, major tobacco producing states, where farmers are encouraged to move from tobacco to other crops. I'll read out the states where this is happening: Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Odisha, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, and West Bengal. In all these states, sir, has it had an impact? Yes, it has had an impact, because over 1.12 lakh acres of land has shifted from tobacco growing to other crops. And I'm talking about a period between 2017-18 to 21-22. So what are the crops to which they moved? Each state focused on its own area, but largely sugarcane, if it is an irrigated area, sugarcane, groundnut, oil palm, cotton, chili, maize, onion, pulses, and turmeric, if it is irrigated. If it's non-irrigated area, or if it is a state-specific subject, I'll read out the example of 3 states. Telangana tobacco growers moved to producing Bengal gram and chilies. Odisha, from tobacco, they moved to vegetable growing and maize. Karnataka, they moved from tobacco to soya bean and sugarcane. So, this move from tobacco growing is being encouraged.
And 10 states have been given that attention through this program. As I said, more than 1.12 acres of land have moved from tobacco to other crops. Equally, are we giving any attention to BD workers? Sir, 49.82 lakh registered BD workers are there in this country. Now, for them, labour welfare scheme under Ministry of Labour and Employment is implemented across the country through labour welfare organisations situated in 18 regions across the country, including welfare of the BD workers and their families. What are the specific schemes which are being given for BD workers? The healthcare facilities through 10 hospitals and 279 dispensaries, reimbursement expenditure for specialized treatment. Sometimes it is now covered under cashless, paperless, but reimbursement also happens when they go for cancer treatment, when they go for tuberculosis, if they go for any heart diseases, or even for kidney transplantation. So their reimbursement method works. Financial assistance is also given for education of children of BD workers from class 1 to college or university, and the amount given ranges from 1,000 rupees to 25,000 rupees per student per annum, depending upon the class in which the child is or the course that the child is doing. Other than this, subsidy of 1.50 lakh per beneficiary for construction of a Pakka house is given under the revised integrated housing scheme, which commenced from 2016. RIHS has been converged with Pradhan Mantri Awas scheme. Other than this, of course, you have PM Shram Yogi Man Dhan, PMSYM, Suraksha Bima Yojana, Jeevan Jyoti Bima Yojana, Jan Arogya Yojana, public distribution system happens, Gramin Kaushal Yojana, and also the Swanidhi, Deen Dayal Antyodaya Yojana, and so on. So all these schemes also aim at the BD workers. Pramod Tiwari ji again has mentioned that no mention of health and related expenditure is made here. I want to just highlight, sir, probably Member Sagarika Ghosh also mentioned this. Health and wellness have been a key focus of our government. Prime Minister Narendra Modi has been very keen that in the last 11 years, I can read out the amount being spent on health. The last year of UPA government, 2013-14, 33,278 crores have been spent for health ministry's budget allocation. Whereas 25-26 this year, the BE, I'm comparing the BE with BE, 99,858 crores have been allotted, 3 times more. So, other than that, between 2014 and 2021-22, 14-15 and 21-22, government health expenditure as a percentage of GDP rose from 1.13% to 1.84%. Government health and expenditure is a share of overall government spending also increased from 3.94 to 6.12%. Between 2014 and 22, per capita health spending tripled from 1,108 rupees to 3,169 rupees. This is per capita, sir. Other than that, of course, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana gives protection for nearly 55 crore beneficiaries, 9 crore plus, over 9 crore hospital admissions have been entertained under that, resulting in 1.3 lakh crore or even slightly more worth of free treatments. So healthcare has taken a good priority in this government. More than 16,000 Jan Aushadhi Kendras now present in almost all the districts of the country
provide generic medicines at affordable prices, often 50 to 90% cheaper than the market rates. Then under the mission Indradhanush, 5.46 crore children and 1.32 crore pregnant women have been vaccinated against 12 diseases. This targeted initiative actually has contributed to a significant decline in the maternal mortality rate from 130 per lakh live births, that was in 2014 to 16, to 80 in 2020. So the last 11 years, sir, the government has approved or established several new aims across the country and in fact across several states, and set up also very many medical colleges, including the first ever AIIMS in the Northeast, located in Assam. MBBS seats have been increased to 1.18 lakh, and 74,000 PG seats have also been added since 2014. So tobacco products are being sold near schools in Tamil Nadu. Was Sri Thambiduraiji, I can't see him here. He had observed it, but I need to say that there is an act from 2003, KOTPA, which is the Cigarette and Other Tobacco Products Act 2003. A provision has been made to prohibit the sale of tobacco products to an individual below 18 years, and this would apply to 100 yards around a school that it cannot be sold. Guidelines of the Tobacco-Free Education Institutions guidelines were also issued in 2019. So I would want to highlight to Honorable Member Thambidurai that GOA, Government of India, conducts tobacco-free youth campaign every year since 2023. Maybe greater awareness is required in Tamil Nadu. Sri Shivadasanji had raised this thing about lottery. I'm not sure I should be answering this here because this bill has nothing to do with the lottery system, sir, but he has raised it. I just want to highlight the fact, sir, that the 56th meeting of the GST Council, which was held this year on 3rd September, when the new generation GST decisions were made, which is much welcomed by everybody. The GST at that time had recommended, the Council had recommended, increasing the GST rate on supply of lottery tickets from 28% to 40%. As I said, 28 doesn't exist anymore. Lottery cannot go to 18, so it went to 40. But of course, a delegation came and met me saying from Kerala, no, this will affect because a lot of people who are selling these tickets are poor people and so on. So this decision of the GST Council was unanimous. In Kerala, sir, the lottery is run by the state government. The supply happens within the state, and therefore there is no IGST also involved. It's all entirely state governments. And the SGST collected entirely is retained by the state. And 50% of the GST collected will go to the 41% will go from the CGST proceeding to the state. Now, it's a very considerate and very, humanitarian touch that these people will suffer. But the tax is on the state government. It's not on those people. And the state government gets the revenue. I'm sure the state government will be broad-minded enough to please give something to the people now that everything is coming down and take care of their own citizens, because that is something which is well within the state government's limit. Sir, the other most important point which I wanted to, there are few more replies that I have to give, sir. Sri Girirajan, I'm not sure he's here now. So he said middle class is unhappy, there is high inflation,
Salaried class is being penalized. So this is an excise duty, tax is being imposed on cigarette smoking. I am not sure how I'll be able to answer that. Sir, and also, inflation is high. So inflation, CPI is below 3%. Below 3%. And in the last 6 months, it has remained well before the tolerance limit which is given under the FRBM. So even now, if I have to answer on high inflation, it's a bit difficult. We can always reserve it for the day when really inflation is much higher than the forbearance limit. And Honourable Member Arun Singh ji has spoken elaborately about the GST next generation. So the cut actually, GST cuts have actually benefited people on their daily use items. I've been going, wherever I go to the local shops and ask them, are customers coming, are they buying, are they asking questions about how much the rate has come down on that particular commodity that they want to buy, or you are helping them to understand. Everywhere I'm getting reports that yes, the rates have come down. So I just want to, in fact, the last visit was in your town, sir. Not so much Tirupur, but in Coimbatore. And the grocery shop, people do tell me that people are. In fact, I went to the grocery shop owner's house because he said, not just my shop, please come home. There he had assembled a group of people from that neighborhood. One small family, sir, said my monthly grocery bill used to be something like 4,280. Now it's actually come down to 3,100 rupees. And they were actually happy. There are, you please go check it up with the people who I met. I'm not lying here. All right. Sorry? Sorry? Are you saying I'm lying? I'll give you the address of the people. Please go visit them. In Coimbatore, sir, your own state. So, sir, there is a very clear message that the rates are coming down. So in this debate of excise, where I'm going to impose the excise duty on cigarette smoking, suddenly if I have to answer these issues, I thank actually Shri Arun Singh ji, who's spoken on detail about it. Sir, again, the issues raised by Honourable Member Sagarika Ghosh pertain to the Manrega, very valid, very relevant, very sensitive, important for West Bengal. We've answered this several times. Now I'm answering on excise, but the issue has been raised. So I will answer it, sir, just as I've answered a member from Tamil Nadu. Sir, as per the Manrega Act 2005, it is the responsibility of the state government to ensure transparency and accountability in the implementation of the scheme. Based on central team's inspection reports highlighting implementation issues, the Ministry of Rural Development had sent several communications to the state saying, please do the rectification. I'm told there's still some rectification pending. Consequently, the funds were stopped since March 2022 under Section 27 of the Act due to non-compliance with the central government's directives. The latest action taken report, sir, dated 11th July 2025 this year, the West Bengal state has reported completion of recoveries of 4.81 crores identified by the central teams in 4 districts, which means the central team pointed out something, after which the correction and rectification work is started. They've collected 4.81 crores from 4 districts, along with the status of the disciplinary action initiated in this regard. This itself, I think, is an admission that things were misused. All right, sir, of Manrega. Subsequently. No. You got your own opportunity to speak now. Minister is not interested in the reply. After my giving the reply, you raise more issues. Now,
No. Nothing will go on record except minister's reply. Sir, ministry subsequently, thank you, sir. Please do listen to the reply and then you may permit them to ask more questions if you want, sir. Subsequently, the Ministry of Rural Development, again a letter on 11th November 2025, requested the state government to furnish a comprehensive action taken report with regard to the total districts of the state along with the details of financial recoveries made, disciplinary proceedings which have been taken, criminal action, and all other corrective measures undertaken by the state. Sir, between 2006-7 to 2013-14, the central funds which were released to West Bengal under Manrega stood at 14,985 crores. 2006-7 to 13-14. Now, between 2014-15 to 21-22, comparable number of years, our government has released 54,416 crores, which represents a 261% increase in Manrega alone. 14,985 compared with 54,416. 261% increase, irrespective of the fact that we are still asking them for taking action where things have been pointed out as not right. So the commitment of the central government as regards Manrega beneficiaries in the state of West Bengal is absolutely there, and we expect that this transparency with which we want to handle it will continue. Now, further, the Honourable Member has said Central Road and Infrastructure Fund is not being transferred. I want to just highlight, sir, 24-25 RE, 25-26B, the government has so far transferred 13.25 lakh crores since 2002 to 2003. 2002-2003 down to 2025-26, 13.25 lakh crores has been transferred under this head, Central Road and Infrastructure Fund. How much was collected, sir? Because it's a cess? No, it's a fund collected. 12.62 lakh crores were collected in the same period. Collection is 12.62 lakh crores. What went as under this head to Bengal is 13.25 lakh crores. No, total. Total. No. She is not yielding. You please, please, my dear. Please, my dear. No, you will get your chance when you are speaking. It is for the minister to reply now. I'll finish, sir. I'll finish and then you can. Yes. My dear. You understand. Sir, I'm talking to you only, sir. Further question was raised. No. Oil industry. No sound from this side. No cross talking. No. You please sit down. Let her complete her reply. Please. Sir, thank you very much, sir. I want the other point which was raised by the honourable member was Oil Industry Development Fund, OIDF, has not been transferred for appropriate usage. I want to say, sir, an action taken note was conveyed to the PAC, Public Accounts Committee, that since the government has been financing various activities under the budget, nothing will go on record except the minister's reply. An action taken note was conveyed to the Public Accounts Committee that since the government has been financing various activities from the budget which qualify as development of oil industry within the purview of the Oil Industry Development Act of 1974, and in view of the emergent situation of energy security, such expenditure is likely to increase in the near future. It was therefore
further stated that these activities have been financed through the resources of the GOI, of which cess under the Act is a part. But to avoid further confusion, Government has decided to constitute Oil Industry Development Fund as per the provision in Section 18 of the Oil Industry Development Act of 1974. The fund has been created in public account of India and has been operationalized from 24-25, financial year 24-25. An amount of 17,730 crore and 19,376 crore was provided for transfer to the OIDF, which is the Oil Industry Development Fund, in the RE of 2024-25 and in BE of 25-26 respectively. So on the Oil Industry Development Fund, I've given you what has happened and how much fund has been transferred. The fund creation also to enable specific oil development activities to be funded from the fund rather than from the budget. So that has been explained, sir. So next,